So before starting, I want to know from you guys that what do you know about Hive? Like, what is Hive? Just in one word, what do you think? What is Hive? I want you to answer in one word only. Database. Wow, great. Data warehouse. Warehousing tool. Warehousing tool. What warehousing tool? Good, good. Query engine. Okay. Okay, perfect. Query engine, databases, data warehouse, data store. Anyone who can answer? Is it data store? Data store. The okay. It does OLAP. And okay, but okay. But do you guys know what is data warehousing? You know the term data warehouse. And what is data warehousing in one word? ETL. Okay. OLAP. Machine. Okay. Data which we can't store in database. Okay, good. Krishna. Huge data. Okay, okay. So a lot of variety of answers. Good. Data storing after processing, distill data. Okay. Okay. Good, good. So before we start, I think I should give you brief introduction about the Hive. But before that, as we know, it is a part of core component of Hadoop, right? It is one of the core component when they have built the Hive. Okay, so like when they have built the Hadoop environment, the Hive was the included part, right? So it is one of the core components. And if I tell you its importance, so for me, according to my knowledge and my experience, Hadoop is all about Hive for the 80% of time. Why I am saying that? Because you are storing data, however, you used to store it in RDBMS and now you are storing in HDFS. But there is no sense of storing data if you are not able to get the insight from that data. Am I correct? Right? You need to get some insight from the data. Correct, correct. So for that, they have built the one tool Hive, which has multiple dependencies. So if any one of you can answer me, what is the dependency of Hive? Anyone? Search. No. Guys, please answer. There is 209 participants. Dependency, HDFS, map reduce, MR, HDFS. Okay, so I guess what I will do, I will start with the basics, very basics. So when I reach till the point when I explain you about Hive, everyone will be on the same ship, which is the ship of Hadoop, and which sails over the sea of Linux, ocean of Linux. Okay, which has the platform, which has the deck, which is the HDFS to store the data, which has the platform, which is Yarn, over which it processes the data, and it has the framework, which is the Hive. So if you can relate to my words, it will be easy for you to understand. Okay. So let me start with before even telling you or explaining you what is Hive and why we are using Hive. First, we understand how it comes from. Okay. So let me share my screen. So is it visible to you guys? There is one whiteboard. So there was some mistake also that will like come on that part that I have asked you what is the Hive, whether it is database or data warehouse. But before that, I will explain you what is the dependency of Hive. And then it will be more easy for you to understand. Okay. So let's see what they wanted to do. They wanted to build the framework, okay, which can store the huge amount of data at some platform. Okay. Handle the petabytes of data. Yes. Even
the exabytes. If you know, the Apple has what has happened? We don't want this. Apple has 1,000 clusters with more than 10,000 nodes in each cluster. That is huge. Okay. And if you will consider the amount of data they can store on single node, that will go over 32 TBs. So that is huge, right? Okay. So we will talk about actual scenarios too. But first of all, let's begin with what are the dependencies and what actually Hadoop is. So that will be more clearer to you. Okay. So they needed one platform like HDFS on which they wanted to store the data. Okay. Then to process that data, obviously they need another platform. So which platform came into being? The Yarn, yet another resource negotiator, which is the authorizer and arbitrator of resource-wide cluster utilization. Please focus on my words because after using these words, people or whatever your interviewer is going to know that how much understanding you have for the components. Okay, like Guruji says, right? Gavandi way and the admin way. So we have the admin way, right? So now अब उन्होंने क्या किया था? They have built the HDFS for storage and yarn. Okay. So Mohsin, yeah, sure. So you can listen to recording multiple times to get used to it. Okay. You won't get it in single use. Okay. So now they have stored the data. They have yarn. They need something to query the data. So what they made is one query engine, Hive. I will explain you this architecture one more time when I will be done with all of my nomenclatures and keywords. Okay. Okay. Then there is some other components too in Hadoop, right? Now we are talking about Hadoop, like Spark, which run over the yarn, right? Everyone knows Spark on yarn, Hive on Spark. That is why I written it beside to the Hive and yarn. Okay. So whatever will run over the platform of yarn will come over the yarn. Okay. So Hive has dependency with yarn and HDFS. Spark has dependency with yarn and HDFS because Spark will use execution engine as why they don't use RDMS. Very good question. I will be coming on to that also. But first, let's done with this. Okay. Abrar. So yes, Spark. Then there is more framework like MR and Taze in CDP. Taze is default engine, and they have removed the MapReduce if you know. Then Pig and etc. Okay, Impala very good. So where Impala will come? We are understanding the dependencies also, right? So will should I write Impala here? Who was there? Okay. So can I write Impala here? Do Impala have dependency with Yarn? Amir, no. Okay. No, 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 no. Good, good, good. You are smart people, no? So I will not write Impala here because Impala don't use the resources from the Yarn. But Impala does have dependency with Hive. Correct. Correct, guys. So one more component, let's see if your knowledge is practical one or you have just listened to someone else. So can I write edgebase here? Yes, wow, great. Okay, why not, guys? Some people are saying yes, and some people are saying no. No, okay. So people who are saying yes, they are totally wrong. Okay. So even HBase is just a storage service and which will not be dependent upon the yarn. It will not use the yarn at all.
Okay, so what we can use here, like now, let's say anything else. Trino you can write, or Druid you can write here. But I guess Druid is also, you must not aware of these components also, but just listen to the words. Trino is one of the component. HDFS database. What is HDFS? When customer is end user, we use HBase. Okay, customer is end user, then we use HBase. So I will write the two components over here. Okay, which are these two components? The Impala, okay, and the HBase. HBase. Okay. So now we know the core components and their dependencies. Hive will be dependent on yarn and HDFS. Spark will be dependent on yarn and HDFS. MapReduce, Taze, Pig are the Pig is something for extraction purposes, for cleaning of data. Nowadays it is almost absolute, but some of the open source communities are still using. Let me tell you the most famous name which are currently using. The Pig is the Yahoo, and you know why they went absolute, so no need to tell. Trino is one of the SQL engine that will be given with Hortonworks data platform, HDP. Impala is the ad hoc query engine, and HBase, as you know, is the NoSQL engine or NoSQL database. So end user has nothing to do with it. It is for high throughput writing, and for small file issues will also get resolved with it. Okay, so now some component are also will come into this picture. Let's see which components. So if I tell hue, why I'm writing hue over here? Okay, this is something. Okay, hue and Uzi. So what is Hue? What is Uzi? So let me tell you in simple words. Hue is the open source SQL assistance for databases and data warehouse. Yeah, browser. But when you will go like in Hadoop admin 1 year, 2 year fresher level, that is okay. Hue is a browser. But when you will become the solution architect for Hadoop or data architect, you must use the community words, right? Like SQL assistant, open source SQL assistants for the data house and databases and data warehouse. It is not limited to Hadoop. Okay, they have added. You will get it into EMR, HD Insight, or let's say any browser. Even if you are using RDBMS, you can use Hue. Okay, yeah, correct. And what is Uzi? So Uzi is a workflow scheduler for scheduling the Uzi jobs, right? Uzi workflows. So you can, why I have written it over here? Because using you can submit Hive jobs, Spark jobs, MapReduce jobs, right? Impala queries, HBase queries. You can run import table and you can create multiple users. Hue has its own environment. Okay. Okay, guys. Okay. So, and Uzi can schedule job for Hive, Scoop. Okay, I have forgot to mention Scoop also. One of the main component, guys. Scoop. Okay. So using Uzi, you can also schedule any kind of job. Okay. So that is why it is written over here. But we are forgetting the main dependencies. The whole, this is the Hadoop. Okay. And this Hadoop is dependent upon which component? Kafka you can use out of the cluster also. That is why I'm not including that. Kafka is independent component. Okay, it can run independently. Yarn you can give dependency upon the yarn, but for now we are keeping it outside. Okay, Zookeeper, right. This is one. So we missed the component Zookeeper. So where is the Zookeeper? So this black border outside is wholly Zookeeper, which keep everything in synchronization. So
one of the most important question in every interview that you will going to face is what is zookeeper and what is the purpose. So it does, don't go and directly tell like it does the leader election follower. Okay, it is one of the activity. So it is the service which keep the distributed service into the cluster or into the system into the sync. Okay, they keep all the services in sync, and whenever the client of that service will connect to zookeeper, it will coordinate to, and it will provide the latest metadata. Yeah, that is what the orchestration tool is. Okay, so it will provide the latest metadata. They will keep each zookeeper server in sync for managing the state, and will provide the latest metadata whenever they will connect to zookeeper. Okay, so zookeeper has Z node. Whenever you will install any service, if someday I will take the session with zookeeper, so I will dedicatedly show you how to log in into zookeeper shell, how to see which Z node there, and how to get the information from the Z nodes. There is a lot to learn in into the component, so don't underestimate the zookeeper. Zookeeper is one of the main thing. Okay, so now we have understand all the understanding of the system, like the dependencies, right? So are you all with me till now? Right, perfect. So from this diagram you can also answer the one of the question that how cluster starts. So it starts with the help of dependencies. So first, when you will start the cluster, it will start zookeeper. When zookeeper will come up, then it will start hdfs. In hdfs also there is dependencies like name node will get start, but it won't come out of the safe mode until and unless the minimum number of required data node will be active. Okay, ओके, इस भाई बना दिया किसी ने तो भी शॉर्ट फॉर्म. सो ओके, देन यहां से याद रख लो यार लॉजिकल. देन यान will start, then hive or spark will start. If there will be hive on spark, then first spark will start. Yarn and zookeeper, there is like zameen asman ka farak. Okay, so I will tell you that also. And then if stays, they are services like they are the engines. They will not like start होगा ऐसा कुछ नहीं होता, उसका status वगैरह नहीं रहता. They are the engine. Whenever the API will hit them, they will be active. Scoop also, when the API will hit them, they will be active. But you know, it's a component, it will be, that is why I have written mapr, tejas, pick, scoop here. There is reason. My voice is breaking. Uh, no, brother, that is not possible. Okay, clear. So, right, then Impala and HBase will become active. That will be the sequence. For example, after Hive will be active, Impala will come up because Hive has dependency of high meta store. Okay, HBase can be active after HDFS. So this is the dependency we have understood, like the dependencies. Okay, now let's come to our main topic. Okay, so now we are on the same ship, we can sail it. Okay, let's start, guys. So as I said, most of the guys were saying it is database. After I pointed out, some said it is data store, and some of you said data warehouse. But there is a lot of the difference between all three terms. Okay, there is huge difference. So some said data warehousing is OLTP, OLAP, or some words they were using. If I will ask you what is OLAP, then in one word, can you answer me what is OLAP? I don't want full form, guys. Okay, I can search that online analytical processing, online transactional processing, and what is analytics? Batch processing. Okay, why there is only few answer? Even if you are wrong, I'm not shouting on you guys. So please answer. There is 226 people. Non-transactional data. And what do you mean by non-transactional data? This debate can go into really deep. Okay, analytics income. Okay, hi, transactional. Okay, data warehouse.
Okay. Okay. So warehouse means OLAP and OLAP means warehouse. Okay, good. Prabhakar. Good. Non-compliance warehouse. Not follow asset property. That is not correct at all. Now, Hive 3 supports the asset property for your information in CDP. If you have done little practice on data, you can, it follows acid. Who follows the acid? Guys, do you have understanding of what is acid? Okay, there is a lot of term that I have to explain. Okay, so let's start. Okay, guys. No, 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 no. I know full form. I don't want full forms. I hate full forms. Okay, so we have to make a enable. Okay, okay, let's go Derby. There is a lot of messages, but it is good that you are guys replying. So that means we have the active session, right? Okay, so let's begin. Database, some said, okay, and some said data warehouse, data warehouse. Now, don't do chat or anything. Now focus on the screen, please. Okay, and some says data store. Okay. So these are the three terminologies, why they came into being. Before that, let's see when they need to store the data. So let's start with one of the story. Okay, no need to put anything on chat now. Okay, just listen to me. So let's say there was one bank and their data was growing huge. Okay, so some of the IT companies like IBM and let's say Oracle, one of the leader, they said that we should make one system in which we can use all this data. Okay, because पैसों का मामला था भाई, ऊपर नीचे हो जाता तो लोग पकड़ के मारते उन लोगों को, राइट? सो उन्होंने बोला वहां पे हम सब डेटा स्टोर करेंगे ना, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दे कीप ऑन इम्प्रूविंग दैट थिंग एंड व्हाट they used to store the data. Okay, so that is why they called it database, because this is a one place where their data were residing. On what the primary primary need for that was to store the data. Why to store the data? And which data? The transactional data that people were doing transactions. For example, they were lending money from the bank. They were lending money. They were debating. They were crediting money into the bank. There is debate and credit, right? We debate some. We take money out of our bank, right? So there was transactions going on. Okay, if I come to the word transaction, okay, so it has also a huge meaning. Transaction, it is not the English, like in English I'm not referring to the word of English transactions, I'm referring it from the word of database, from I'm linking it to database. In database, transaction means any entry in or any entry out. Okay, so that is what the transaction is. Now you understand the meaning of RDBMS. Okay, relational database, what it does. OLTP, online transactional processing. And I said what is transaction? It is any entry in or out of the database. So transactional processing means the machine in which transactions are happening. And what is transaction? Debit, credit, in and out, data in and out. Okay, so that is what is transaction. So OLTP is clear. OLTP means online transactional processing. The processing of transactions. We note the transaction over there. Okay, clear. Right. So so they made like they wanted to do भाई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए. जितना पैसा आया जितना पैसा गया वो होना चाहिए, राइट? सो उन्होंने बोले क्या क्या होना चाहिए उसके अंदर, कि फॉर एग्जांपल कोई पैसे निकाल रहा है और वो फेल हो गया ट्रांजैक्शन, सो आइदर इट शुड कंप्लीट प्रॉपरली और अदरवाइज वो होना ही नहीं चाहिए. फॉर एग्जांपल आप फोन पे में यूपीआई करते हो, अगर ट्रांजैक्शन हुआ तो पैसे कट जाता है, अगर ट्रांजैक्शन फेल हुआ तो तुम्हारा पैसा भी नहीं कटता, कोई मैसेज भी नहीं आता, राइट? करेक्ट है बात?
So that is what, you know, so that was the need. Then what they said, first need what, के डेटाबेस की, के तुम्हारा ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाए भाई, ट्रांजेक्शन कंप्लीट प्रॉपरली, और फेल हो जाए, जो भी हो जाए कंप्लीट हो. ओके, दैट वाज द फर्स्ट रूल. देन व्हाट दे थॉट, कि जस्ट अ सेकंड, ओके, सो ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाए. Then what they think, we have made the database. Then they went through some difficulties, और उन्होंने बोला कि whatever happens, even if there is credit or debit, okay, don't let me confuse you, there is data in or out. Now data in और out का मतलब यहाँ से आप लेना क्रेडिट और डेबिट. ओके, वॉट एवर हैपन्स एट द एंड देयर शुड बी इक्विलिब्रियम. ओके, इक्विलिब्रियम मतलब तुम पैसा निकालो बैंक से या डालो बैंक से, एट द एंड तुम्हारा जो क्रेडिट और डेबिट का डिफरेंस है वो जीरो आना चाहिए. मतलब तुमने अगर अकाउंट में से 10 रुपए निकाले तो उधर टोटल बैलेंस में से भी 10 रुपए दिखाना चाहिए, उधर 9 रुपए नहीं कटना चाहिए. तो बैंक का नुकसान, और 11 रुपए काट लिया तो तुम्हारा नुकसान. सो दैट शुड नॉट हैपन. Okay, so at the end you should have the credit or debit equilibrium. Okay, then what they said, कि भाई अभी मेरे को डेटाबेस के ऊपर काम करना चाहिए, राइट, काम, मेरा डेटाबेस के ऊपर मैं काम करूंगा. सो वॉट एवर हैपन इनसाइड द डेटाबेस, अगर दो लोग एक साथ एक डेटाबेस में काम कर रहे हैं, तो उनका जो प्रोसेस है एक दूसरे के अंदर मर्ज नहीं होना चाहिए, एक दूसरे के अंदर इंटरफेयर नहीं होना चाहिए. देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ इंटरफेरेंस. ओके, interference of what, interference of entries, data out, interference of and your processing, एनी काइंड ऑफ. दो सेशन चल रहे हैं, दो यूजर है जो डेटाबेस में एक टेबल ए यूज कर रहा है, एक टेबल बी यूज कर रहा है. सो देयर शुड बी आइसोलेशन बिटवीन देम, करेक्ट. ओके, वो दे शुड बी आइसोलेटेड. ओके, एंड व्हाट दे सेड देन, कि उनको फिर बाद में एक और एक डिफिकल्टी है दैट अगर उनका सिस्टम क्रैश हो जाता था, ओके, सो उनकी एंट्रीज के अंदर एबनॉर्मेलिटीज आ जाती थी. ओके, सो दे सेड लाइक ऐसा नहीं होना चाहिए भाई. लेट मी टेल यू, फॉर एग्जांपल देयर इज वन पेपर, okay, and you have written something over it with pen, and you crumbles the paper, and then when you straighten it out, वहां पे वैसे ही पेपर में जो लिखा है वो होना चाहिए. तो that same rule should be followed here also. So that is what we call durability. So now you understand the meaning of property acid. So the transaction should be complete, means the atomicity, the data in and out, there should be at the end, there should be equilibrium. That is what is consistency, isolation, and durability. Okay, which makes the transactional guaranteed. Okay, now you know how they have made the acid properties guaranteed transaction. Okay, good. So till now everything clear to all of you, what database does. So this is the OLAP, guys. Oh sorry, this is OLTP, online transactional processing. But database are made for OLTP or OLAP. For what purpose? Can database does OLAP? Right? Then why Hadoop came into being? Didn't you ever have a thought of it? Why? When database मेरे बोलते सीनो बोल दिया को डालने, right? Okay. OLAP impacting OLTP, correct. How it was impacting? Because see, what is the primary function is to support to the your customers. Okay, when you were doing OLAP, so when there is extensive OLAP, definitely your OLTP is going to be hampered, right? So that is why they decided to make the OLAP system. Okay, and OLAP is nothing but your data warehousing. And what is OLAP?
you process the data which is came from the transactional processing. Okay, you process the data which is came from transactional processing to gain some insight, to make use of the insight. What they made the database with the intention like यार चलो बनाते हैं कुछ तो भी जिससे हमारे डेटा में कंसिस्टेंसी वगैरह सब आ जाए, उन्होंने बना लिया. देन एज द मार्केट ग्रोज उनको देखना था सारा इनमें करप्ट कौन लोग हैं, राइट, हु आर डूइंग फ्रॉड टू अस, राइट. So they started to do processing of that data. They used to get insight from that data. Okay. So getting insight from the data is the OLAP. Okay. And that is what the function of data warehousing. So database is capable of doing both OLTP, OLAP, OLTP transactional processing and data warehousing. But their ability, their performance is going down. So Hadoop guys decided, चलो एक platform बनाते हैं जहाँ पे हम OLAP करेंगे. ओके, सो दे वांटेड टू मेक इट चीप. उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया कि चलो भाई दो डेटाबेस ले लो ना, दो आरडीबीएमएस ले लेते हैं ओरेकल से, राइट, और उसके ऊपर एक में ओलैप करेंगे एक में ओएलटीपी करेंगे, राइट. सो सम पीपल हैव डिसाइडेड टू डू दैट टू एंड दे हैव डन इट, बट उसका कुछ फायदा नहीं हुआ. व्हाई दे वर नॉट एबल टू गेट बेनिफिट फ्रॉम देम? बिकॉज data was completely going up and they have to scale their RDBMS, and the cost which is associated with RDBMS was too far, है ना, बहुत ज़्यादा expensive था वो. So that is why they have started to build Hadoop, and then they built all this thing, storage कर लिया, yarn कर लिया, तो उसको कर लो. Then they have made some more. With the time they have increased the efficiency of the component. They have developed the component now, and today we have the Cloudera Hortonworks mapper. Cloudera and Hortonworks are merged now. Okay, so this is what data warehouse is OLAP, right? OLAP. Okay, but what is data store then? So Hive is not database, हमको समझ गया. So OLAP है, तो अब Hive data warehouse है या data store है? Now the question is, Hive is data warehouse or data store? So data store is something which handle the all kind of data. Okay. So Hive is only for which kind of data? Structured data, right? You cannot store the unstructured or semi-structured data over there. You can use Spark to convert your semi-structured data into the structured data. Hive has the fixed schema, right? If you have a variable schema, your data will be unstructured. That is why the HBase came into being. Okay, now you have the reason for development of HBase. Okay, it has flexible schema, and unstructured data is not mean something like video, audio. You know, the data which has not fixed schema is the unstructured data. Hive stores schema in the database and process the Hive. I can use. Okay, I will tell that too later on. Okay, so data store which process all kind of data. Okay, so this much is clear to all of you, right? Database, data warehouse, ACID properties, and Hive 3 support the ACID. So can you tell me, can we move the OLTP to the Hive 3 as it supports the ACID property? Do you think can we move? Yes, good. ACID tables, database is only. Can we move? What is my question is, can we move the data? Can we move the OLTP to the Hadoop? Now Cloudera has made Hive ACID compliance with the ORC file format. Remember my words, okay? It is supported with the ORC file format only. Yes. We can move, right? Then we have again the problem of performance, OLTP and OLAP. Just think, guys, why we came to Hadoop to increase our performance, to make both the solution separate. Now you are again mixing both at the same place, right? So that make no sense at all. RDBMS is not replaceable. Just listen to me. RDBMS and Hadoop is not rival to each other. They are working together.
They didn't went to school. They are not rivals. They are from open source community. They are contributor to each other. They contribute to working of each other. They are working together. That is why they are using transactional data from the RDBMS for tools like Scoop or Kafka. Okay, and then they are bringing to clusters. They are using high compaction ratios to squeeze that data into the small chunks, and they are putting it onto the highly scalable cluster, and then they are processing it heavily as per the demand with the various tools like Hive, Spark SQL, Impala, HBase, Trino, Druid. These are the components. No, at the last, they have to serve to the client. They are serving to the client using databases. They are increasing their customer base using analytics. Okay. So one, as sir says, the main, there is two type of people, right? Customers, those pays, and the user. Okay, तो उनको पता चलना चाहिए यूजर कौन है, राइट? तो यूजर्स क्या करते हैं, भीड़ ला के देते ना, तो वैसे भी वो कमा रहे हैं। ओके, सो वो कमा ही रहे हैं। ठीक है, हिंदी में भी बता रहा हूँ, ठीक है। ओके, सो वी आर डन विथ आवर बेसिक्स। एसक्यूएल नो एसक्यूएल रह गया है, तो एसक्यूएल का भी बता दिया मैंने। इफ यू लिसन टू माय वर्ड केयरफुली, आई टोल्ड यू व्हाट इज एसक्यूएल। डेटाबेस जो है एसक्यूएल है, डेटा वेयर हाउस जो है एसक्यूएल है। नो एसक्यूएल क्या है, इम्पाला है। तो आई टोल्ड यू व्हाट इज द डिफरेंस, राइट, बिटवीन बोथ ऑफ देम। एच बेस क्यों यूज कर रहे हैं, फिक्स स्कीमा नहीं है, दैट इज व्हाई इट इज नो एसक्यूएल डेटाबेस। इट कैन क्वेरी द डेटा विच हैज नो स्कीमा। अभी नो, जिसका फ्लेक्सिबल स्कीमा नहीं है, राइट, तो वो नो एसक्यूएल हुआ। अब मैं उसको नो एसक्यूएल क्यों बोल रहा हूँ, है ना, क्योंकि एसक्यूएल जो बनाया है इन लोगों ने वो फिक्स्ड स्कीमा पे काम कर सकता। उसमें टेबल्स बढ़ेंगे नहीं, कम नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल, इंडिया का जनगणना हो रही थी तो उन्होंने मोंगो डीबी यूज किया है, विच इज इन नो एसक्यूएल डेटाबेस। क्यों? क्योंकि उसके अंदर लोगों की बदलने वाली है ना, उसमें स्कीमा फिक्स नहीं है, किसके आय का स्कैन ले रहा है, बच्चों का जो है फिंगरप्रिंट्स नहीं आते, राइट, तो उनके मॉम डैड का ले लेते हैं, बाद में उसको कर देते हैं। नाउ इन डेटाबेस यू कैन नॉट alter what we can say particular place, right? I'm not getting right word for that. Like there is consistency, right? So it will affect the performance. So they have taken the example and use case of MongoDB. उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट किया एज अ नो एसक्यूएल डेटाबेस, क्योंकि वहां पे एजेस बदलने वाली थी, बहुत से स्कीमा में चेंजेस आने वाले थे, फ्लेक्सिबल स्कीमा होने वाला था, लोग इतने ज्यादा है, राइट, किसका हाथ नहीं है, राइट, फिंगरप्रिंट कहाँ से लगाएगा, आईज के रेटिना स्कैन हो रहा है ना। सो वहां पे फिक्स स्ट्रक्चर डेटा उनको नहीं मिलता था। ओके, सो उनको बाद में, फॉर एग्जांपल, दे वन डे दे हैव डिसाइडेड टू लिंक पैन कार्ड टू आधार कार्ड, राइट, करेक्ट। In database, when the table are created, you cannot change the columns and all later on, right? There will be huge discrepancy will come at that place. वहां पे बहुत ज्यादा उनको discrepancy produce हो जाती थी। That is why they went to MongoDB. So try to think in that way whenever you are learning any new component. Okay, what can be the reason behind that? Okay, so okay, we have done with a lot of things till now. All the basics has covered. Now our main topic will come, okay, which is the Hive. So let's see Hive. So what is Hive? If I will tell you the definition right now, it is a open source data warehouse solution for Hadoop. Simple. Now you can understand everything. Now you can change your words. Okay, so कैसा है, यहाँ पे कितने लोग हैं, 228। यहाँ से अगर 15-20 लोग भी साथ में इंटरव्यू देने गए तो दे शुड यूज देयर वर्ड wisely and differently. Okay, make your own words, use the keywords into that and explain them in your own way. Okay, so Hive is a data warehousing solution for Hadoop. Okay, which supports the Hive query language, right? It has its own language which is almost similar to the SQL language. You can run your queries over the big data which is residing over your HDFS using the platform. Which platform? Yarn, as a resource manager. Okay, so
why I'm able to tell you this, if I will start to speak on only Hive, I can speak like whole 2, 3, 4 hours continuously, right? Because you have to just go with basic. Okay, so what Hive does, it does batch processing, it does parallel processing. How it implement the parallel processing? Anyone can answer me? How Hive can do parallel processing? Anyone? Guys, please reply. I am seeing that your I'm seeing that chats are gone down. Okay, so please reply using HQL. Okay, by simultaneously data is distributed using map. How high using yarn? That is the correct one. Okay, okay. So using yarn, why parallel processing? Because our data is distributed among multiple nodes, right? So it uses yarn. Yarn will guide or will order to the node manager that launch the containers over the multiple servers using the data locality, and they will launch the servers. They will launch the container are nothing but the logical construct of your resources, right? So that is how batch processing and parallel processing going to be happen. Okay, so now let's jump onto our architecture thing. So if I tell you, some people will define the architecture in people define architecture in two way, right? Like गवंडी वाला way and second is admin वाला way. तो हमको गवंडी वाला way नहीं जाना है, because if for example some senior guy was sitting over there for your interview, okay, so समझ लो अगर उसको पता चल गया तुम हो नहीं हो फिर भी, तो ये बता देंगे कि तुम डेवलपमेंट बैकग्राउंड से आए हो, क्यों? So let's jump. Are you able to see my another tab or not? Okay. So if I tell you Hive architecture, if you will go on images, there is a few images, right? Okay. Let's see this one. Mm, Open into new tab. कौन सा वेबसाइट खुल गया है? Oh my God. Where is diagram? Okay. So this diagram is no, ये data flare वाला ना, ये गवंडी है. ठीक है? How can I tell you that? See यहाँ पे compiler, driver, है ना, optimizer. ये ना गवंडी वाले words that we don't have to use at all. Okay. You should know, but don't use it. Okay. So your keywords also play an important role. Okay. So let's jump like let's see if there is है क्या कोई admin वाला diagram. ओके, कहाँ कहाँ जा रहा है ये? सब गवंडी भरे पड़े हैं ना. ओके, दिस वन, ये बंदा है एडमिन. ओके, कौन सा वेबसाइट है? लेट्स ट्यूटोरियल्स पॉइंट. दिस इज मेड बाय सम एडमिन गाय. ओके, आई कैन surely tell you that. Okay, so we will take this diagram and we will understand. Okay, where you HD inside. Okay, okay, so let's do it. So first of all, how we will learn the architecture is not just by component, but how it actually you work with the Hive. Okay, because you don't just have to clear your interviews, you have to work over it. So let's see, you have given with you have given with the task to submit some particular query by your manager or any of solution architect. So where you can go and run the query. So you will go on Beeline server, right? If you have the
authorized and authenticated environment, right? Then if you don't have the right place beeline, you can go on Hive CLI most probably. Then you can do, definitely using Hive you can do it. You can submit your queries. Then then you can use thrift servers. What is the thrift servers? They are the redirecting servers. What is Hive thrift servers? So whenever you submit your query, it uses thrift server, or like when you are submitting job from local machine from your laptop. So there is kind of tunneling thing you create, remote connections or APIs. They are using APIs also. You can submit. That अच्छा हुआ याद दिलाया किसी ने, कौन यूज किया API? हाँ, मेरे को बाद में भी याद दिलाना अगर इफ आई फॉरगेट टू टेल यू अबाउट दिस थ्रिफ्ट सर्वर। इट रीडायरेक्ट योर क्वेरीज, आपकी क्वेरीज को वो रीडायरेक्ट करने के काम आते हैं, ठीक है। तो तुम आप कहीं से भी करो, अगर आप गए कोई तो भी एज नोड है वहां, दैट इज आउट ऑफ योर क्लस्टर, सो इट विल कनेक्ट टू योर सर्वर, कम्युनिकेट विथ योर सर्वर। they can be a web UI based, okay, so you can use them. Communication of Hive server use script, हाँ वही बोल रहा हूँ। So in layman's term they redirect to your queries to Hive server 2, simple। इतना बोल के खत्म कर दो, ज्यादा डीप में मत जाने का। कभी भी याद रखो, never answer unless it is asked, okay, that is the main point of interview। Then you can use thrift servers, you can use even what I was trying to say, the Druid consoles. Okay, we use Druid consoles too. Using the Hive, Druid is one of the best query engine. Okay, to query Hive data, you can do a lot of optimization on that. So Druid consoles से कर सकते हो आप. Then using APIs, for example, Cloud Manager API will be there. You can query even Hive server to even Hive Meta Store only using the APIs. The API can be Ambari API, or you can query using Hive server 1 was the first edition, okay, जो पहला Hive आया था Hadoop 1 के अंदर 0.8 के पहले, उसको बहुत लेस फंक्शनैलिटीज के साथ, that was the Hive server 1, and Hive server 2 is the current version what is going on. That is why everyone you will be see the Hive server 2 daemon, okay. Then API you can use. So these are the multiple ways, might be there will be, and this API you can use which with command, okay. The command even you don't care about, that command is used with this API. Anyone know which command we use to hit the API? Anyone? नो, वो कमांड को ना किसी ने भाव ही नहीं दिया, और इंटरव्यू में भी जाता ना बंदा तो, या कोई भी एडमिन जाएगा ना, तुमको उसको पता भी नहीं रहता, कर्ल कमांड, ओके। सो यूजिंग कर्ल कमांड, अरे प्राइवेट मैसेज मत डालो, सबको देखने दो मैसेजेस। कर्ल कमांड, यूजिंग कर्ल कमांड you can hit the APIs. Even if I tell you, you can deploy a whole cluster with this curl command. This is so strong command, we don't know until we have to deep dive in particular commands, okay. Using curl command you can use APIs, okay. So these are the method that we will use to submit our Hive queries. So this is the one component of architecture, correct. Then let's say where the query will go, okay. So it will hit to the Hive server 2, as we know, right. There will be our Hive server 2 link. Hive server 2 has this driver and everything we were reading here, right. सो हाइव सर्वर 2 क्या करेगा, ये ड्राइवर को देगा, इधर उधर जाएगा, है ना, कंपाइलर करेगा। कंपाइलर क्या करेगा, लेट्स एक्सप्लेन यू हियर। कंपाइलर क्या करेगा, एनीवन नो? वो तुम्हारा सिंटैक्स चेक करेगा, राइट। नो नो मैन, सिमेंटिक चेक विल गोइंग टू बी हैपन इन मेटा स्टोर, ओके। सो pass the query, it combines your query, it will break down your query. So ये हाइव सर्वर 2 के अंदर एक कंपोनेंट रहेगा, राइट, which is Hive query engine, राइट, विच इज योर कंपाइलर। वो हाइव को क्वेरी करेगा और सिंटैक्स चेकिंग करेगा, तुमने क्वेरी सही लिखे कि गलत लिखे, है ना। तो दैट विल चेक। देन क्या होगा कि ये आ गया तुम्हारा, किधर गया,
वेर इज अवर फर्स्ट वाला डायग्राम, ये वाला, हाँ। सी, इधर क्या है, हाई क्यूएल प्रोसेस इंजन मींस हाई क्वेरी इंजन। ओके, देन वो यहाँ पे क्या कर रहा है, वो आपका क्वेरी चेक कर रहा है। देन व्हाट इट विल बी डू, व्हाट इट विल बी डूइंग, तुम्हारा क्वेरी सही है, ठीक है, तुमने क्वेरी राइट लिखा है, सिलेक्ट जो भी तुमने क्वेरी लिखा है, देन इट विल चेक वेदर द डेटाबेसेस एंड टेबल्स यू मेंशन्ड इन योर क्वेरी इज एक्चुअली प्रेजेंट और नॉट, राइट। सो कहाँ जाना पड़ेगा उसको चेक करने के लिए, वेयर आवर मेटा डेटा इज स्टोर्ड, आवर मेटा डेटा इज स्टोर्ड इन हाई मेटा स्टोर। ओके, देन इट विल हाई कोई इंजन के बाद यहाँ पे गया, राइट, सेकंड स्टेज में चेक कर लिया। अगर तुम्हारा मेटा डेटा वहां मिला उसको, तो इट विल टेल यू दैट ओके एवरीथिंग करेक्ट, इट विल गो टू अनदर स्टेप। पर अगर मेटा डेटा नहीं मिला तो इट विल थ्रो द सिमेंटिक एरर, जो किसी ने पॉइंट आउट किया था इससे पहले, है ना, समथिंग रॉन्ग विद सिमेंटिक। ओके, सो सेकंड एरर कैन बी ऑकर एट दिस स्टेज। इट विल गो फ्रॉम हेयर टू हेयर, चेकिंग हो गया अभी। देन what will happen, hive server 2, what will do hive server 2, it will do the third thing, which is third thing, what it will do, it will tell the execution engine to make the DAG for the perform for execution, फिर spelling देख लो अब कैसा है, execution engine to run the query। okay, if the query is need the processing, okay, there is two types of query, okay, one just reading query, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग फॉर दैट। सो अगर रीडिंग क्वेरी है तो वो क्या करेगा, एग्जीक्यूशन इंजन वगैरह कोई लॉन्च नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल तुमने सिलेक्ट स्टार ऑन डेटाबेस बोला, सब रीड करना है मेरे को, तो वो कोई भी तुम्हारा प्रोसेसिंग नहीं होगा। पर अगर देर इज सम वेयर क्लॉज, फॉर एग्जांपल यू वांट टू से सर्च सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल एक्स वाई जेड वेयर द कॉलम एक्स इक्वल टू वाई, something like that, so there is some processing required। okay, so execution engine, now we, which execution do we have, we have map reduce or trace, ठीक है। सो ये हमारे पास है। देन व्हाट विल हैपन, इट विल, अभी तो मैं एग्जीक्यूशन इंजन ने प्लान बना लिया, देखो उसने बोला कि ठीक है क्वेरी सब सही है, मेरे को मेटा डेटा भी मिल गया, अभी इसको सिलेक्ट करना था, तो प्लान बना लेंगे, सी मेरे को ऐसा ऐसा टास्क बनाना पड़ेगा, मैप रिड्यूस का एक टास्क लिखना पड़ेगा, वो टास्क के अंदर एक मैपर होगा, वो जो डेटा उठाएगा वहां से उसको स्प्लिट करेगा, सॉर्ट करेगा और शफल करके रिड्यूस करके दे देगा मेरे को। सो दैट इज व्हाट द डैग इज, द planning of your execution। okay, so that will be done by Tez in CDP, yeah, like or map reduce। then what going to be happen, ये बोलेंगे यान को, यान who will request execution engine on behalf of Hive server 2 will tell that I need some resources, right, to run my job, so give me resources। okay, so this is fourth stage, right। so yarn will talk to then node will talk to then its application manager। yarn has two components, right, if you know, application manager एंड द शेड्यूलर। एप्लीकेशन मैनेजर क्या करेगा, वो जॉब को सबमिट करके जो हाइव एग्जीक्यूशन इंजन है उसको, जो भी जेवीएम के ऊपर हो रहा है ये सब, राइट, ये एक जावा प्रोसेस के ऊपर हो रहा है, तो वो उसको एक एप्लीकेशन आईडी दे देगा। ओके, एंड दैट एप्लीकेशन आईडी विल बी शोन ओवर योर डिस्प्ले कि भाई ये एप्लीकेशन तुम्हारा क्रिएट हो गया है, नाउ यार्न इज रनिंग योर जॉब। ओके, यान तुम्हारा जॉब रन करना शुरू करेगा। इट विल टॉक टू एनी ऑफ नोड मैनेजर एंड एप्लीकेशन मैनेजर विल लॉन्च द एप्लीकेशन मास्टर फॉर दैट क्वेरी। ओके, फिर एप्लीकेशन मास्टर क्या करेगा, वो एग्जीक्यूशन प्लान को पढ़ेगा एंड इट विल रजिस्टर इटसेल्फ विद द यान। एंड देन क्या करेगा, वो यान को बोलेगा कि मेरे को नोड मैनेजर चाहिए, नाउ मेरे को स्लेव्स चाहिए जिसके ऊपर मैं मेरे टास्क रन करूं। देन इट ये क्या बोलेगा यान कि भाई ठीक है, पर नाउ देयर कम्स द बिगर पिक्चर इनटू द सिनेरियो। ओके, सो ये एचडीएफएस का लेयर है हमारा, राइट। और ये एचडीएफएस के अंदर ना, अगर मैं बताऊं तुम्हारे को तो दिस इज द लाइन, दो चीजें हैं। okay, so there's two things, one is storage, HDFS is totally storage, बस they are running on particular nodes, right, जिसके पास हमको रैम भी है और सीपीयू भी है। तो ये जहाँ पे डेटा है ना, what Ryan will do, it will try to locate the data, ये कि ये जो टेबल है इसका डेटा कौन से नोड के ऊपर है, and it will ask to name node for that information, and name node will बोलेगा कि भाई ये डेटा है इसका पर्टिकुलर डेटा नोड्स के ऊपर रखा हुआ है, तू जा वहां से रीड कर ले डेटा।
ओके, सो यान क्या करेगा, नोड मैनेजर को कॉल करेगा, पहले वो डेटा नोड को कॉल करेगा और वो डेटा नोड के ऊपर जो नोड मैनेजर है उसको कॉल करेगा, एंड विल सी वेदर द रिसोर्सेस आर अवेलेबल ऑन दैट डेटा नोड और नोड मैनेजर और नॉट. If resources are available, it will ask to create the resources containers over that node manager. So node manager जब वो resources, for example, उसके ऊपर नॉट उसकी जो भी तुम्हारा एक्स तीन नोड थे, ओके, तीन डेटा नोड थे, DN1 DN2 DN3, वहां पे नेम नोड मैनेजर भी रन हो रहा है, नोड मैनेजर 1 नोड मैनेजर 2 नोड मैनेजर 3. सो यान व्हाट विल डू, नोड मैनेजर 1 को बोलेगा कि तेरे पास डेटा का ये चंक है, तू उठा और ये क्वेरी है, इसको प्रोसेस कर. It will start the map container over there, and all three nodes they will pick their respective data from same data nodes. तो डेटा लोकेलिटी होगी दैट, जिसकी वजह से तुम्हारा HDFS के ऊपर का हेडेक कम हो गया, राइट. So what will the benefit of that, and how it got to know where is the data residing? Topology.py, right? In topology.py we do we mark that ये वाले क्लस्टर से बिलोंग करता डेटा, राइट. डेटा लोकेलिटी के लिए हम कौन सी फाइल को एडिट करते हैं, रैक अवेयर करते हैं हमारे क्लस्टर को. नेम नोड शुड बी रैक अवेयर एंड वी aware it by using topology.py, and in even interviews they will ask you what is the location of topology.py, how it is written, what is the format and all these things, so keep in mind. तो वहां पे क्या होगा, यान लॉन्च कर देगा, राइट. दिस इज द फिफ्थ स्टेज. जब कंटेनर लॉन्च हो गए, सो कंटेनर विल रीड द डेटा, ओके, दिस फिफ्थ नंबर ना. फिफ्थ स्टेज यहाँ से डेटा रीड होगा, क्वेरीज परफॉर्म होंगे, एंड आफ्टर क्वेरी हैज डन, हाइव सर्वर 2 को सारा रिजल्ट भेजा जाएगा, एंड इट विल शो ऑन योर स्क्रीन दैट दिस इज योर क्वेरी परफॉर्मेंस, दिस इज योर क्वेरी रिजल्ट्स, ओके. एंड दिस इज द आर्किटेक्चर, सिंपल. हम देख रहे हैं प्रैक्टिकली हाउ इट गोइंग टू बी हैपन, राइट. तुमने क्वेरी सबमिट किया, हाइव सर्वर 2 पे गया, हाई क्वेरी इंजन ने सिलेक्ट किया, एचएमएस के ऊपर सिमेंटिक चेक हुआ, एग्जीक्यूशन इंजन, इफ देर इज प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड, यान विल वर्क, ओके. और अगर प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड नहीं हुआ ना, तो ये यान वाला टोटल पार्ट कट, सीधा सीधा हाइव सर्वर 2 क्या करेगा, HDFS से डेटा उठाएगा, ब्लॉक्स उठाएगा, उसको कंबाइन करेगा, एंड इट विल थ्रो ऑन योर फेस, सिंपल, राइट. What is driver in architecture? Driver is something which is used to connect. So यहाँ से तुम कनेक्ट कर रहे हो, ये हाई सर्वर 2 का ड्राइव कनेक्ट करने के लिए क्या चीज यूज कर रहे हैं अपन. चलो गवर्नडी वाले डायग्राम के ऊपर देख लो इधर, ये देखो JDBC ड्राइवर है ना. सो दैट इज द ड्राइवर, एक दूसरे से कनेक्शन के लिए JDBC ड्राइवर यूज हो रहा है. बी लाइन से तुम ड्राइवर को कनेक्ट करेंगे, ड्राइवर से हाइव सर्वर 2 को कनेक्ट करेंगे. ऑप्टिमाइजर, व्हाट इज ऑप्टिमाइजर? इट ऑप्टिमाइजेस योर पाइपलाइन फॉर, लाइक तुमने कोड बनाया था हमने, राइट, हाई एग्जीक्यूशन इंजन बनाया, एग्जीक्यूशन करने के लिए एक डैग बनाया था. इट विल ऑप्टिमाइज दैट डैग, ओके. इट विल टॉक टू द yarn then, and it will talk to the distributed service, right. So this is how it is going to happen. यहाँ पे देखो थ्रिफ्ट एप्लीकेशन बताया उसने, जो थ्रिफ्ट सर्वर से लॉन्च किए गए, है ना. यहाँ पे JDBC बताया, JDBC क्लाइंट आएंगे. टेल मी, ODBC का काम है क्या यहाँ पे? इन हडूप ODBC आएगा क्या? Why they are showing ODBC? Why not? Any reason, specific reason for that? Why? Can you? I know they won't be there, but why? Because Hadoop support JDBC, right? Don't give me that answer, okay? Non-Java connector. Then why? Why I can't use non-Java connector? Other than Java, why I cannot use? I can use my I can use ODBCs to connect my BI application to Hive. Do you know? Hadoop, but in Hadoop cluster, I am using JDBC only. Why it is like that? हम क्यों नहीं यूज करते ODBC ड्राइवर इनसाइड द Hadoop system? Okay, Hadoop writes on Java. Okay, Hadoop is built on Java. Okay, correct. So that is the reason. क्योंकि Hadoop जो है जावा पे है, सारा फ्रेमवर्क जावा पे चल रहा था. Hadoop के अंदर कनेक्शन शुड बी फ्रॉम JDBC.
Okay, Java database connector. That is what its name suggests. Okay, and Oracle means Oracle wala. But you can use BI tools to connect with ODBC drivers to your Hive. There is some implication that you have to enable. Okay, now हमने ये तो सीख लिया, ठीक है, but tell me how authorization and authentication work here. That is also you have to learn. इंटरव्यू में इतना नहीं बोलना है बस Hive का architecture, and no one will going to ask you Hive का architecture now. Believe me. Through Sentry, so where is Sentry will come here? Do you have any answers? Where the Sentry part will come? Security बताओ. Okay. Access data, authorization, first part, second part, third part. Okay. So see, when you have done with your, okay, let me tell you now. Now focus here. Okay. So whenever you submit your job, your syntax checking has done. Okay. Now what will happen? Every service, Sentry का आर्किटेक्चर पढ़ा है आप लोगों ने कि नहीं, आई डोंट नो, बट Sentry हैज थ्री मेन कंपोनेंट. ओके, Sentry सर्वर जहाँ पे मेटा डेटा होगा, और वो कहाँ से एक्सेस होगा, वो भी बीलाइन से एक्सेस करते हैं हम लोग. ओके, Sentry सर्वर को मेटा डेटा. Then there is Sentry plugin which is running inside each data engine. Okay, and Sentry data engine क्या है? Hive is a data engine, Impala is a data engine, Spark is a kind of data engine also, right? So it is running inside the Hive server 2 only. It is also running into Hive Metastore in Yarn, in HDFS. If you will do Sentry HDFS synchronization, the Sentry plugin will run in HDFS also. Okay. So जब आप Hive server के ऊपर query डालोगे, select command चलाया, okay. Then what Hive server will do after checking your syntax, it will use Sentry plugin. It has client, okay, that will redirect to your query directly to Hive plugin, and Hive plugin extract the authorization policies. Okay, it will extract the authorization policies from the Sentry server for that user only. यहाँ पे अगर XYZ यूजर है, दिनेश है फॉर एग्जाम्पल, लास्ट नेम दिनेश ने क्वेरी चलाया, हाउ इट विल गेट टू नो दैट दिनेश है, क्योंकि उसने के इनिट करके दिनेश के लिए टिकट ले लिया था ऑलरेडी. ओके, तो वहां पे एंट्री है उसकी. सो सेंट्री सर्वर बोले, हाई सर्वर टू सेंट्री प्लगइन को बोलेगा भाई देख, इसने दिनेश ने सिलेक्ट का क्वेरी चला के आया है, अभी इसका है कि नहीं मेरे को पता नहीं, बता क्या करना है. तो इट विल चेक दिनेश को सिलेक्ट स्टेटमेंट चलाने का परमिशन है XYZ डेटाबेस, और उस XYZ डेटाबेस के अंदर, उस XYZ टेबल के अंदर, पर्टिकुलर कॉलम के अंदर है क्या परमिशन. सो इफ इट विल ग्रांट यस, then it will go on Hive Metastore and all process will go smoothly, right? Everything will be followed. But अगर उसको नहीं रहा, then it will throw you the exception. Okay, एक्सेस एक्सेप्शन दे देगा, ऑथोराइजेशन एक्सेप्शन दे देगा, बोल देगा कि ये आई नोड के ऊपर आपको परमिशन नहीं है, सो सिंपली टिकट लेके आ, टिकट लेके भी आया तो परमिशन लेके आ. ओके, सो Sentry, and one more thing about Sentry is only for beeline. Okay, for beeline I mean for Hive. You cannot use it for like enabling access to particular directory except the data warehouse directory of your Hive. Okay, you have to do Sentry HDFS synchronization. क्यों करना है, क्योंकि मैं XYZ यूजर बन के जाऊंगा HDFS के ऊपर और कोई तो भी अलग टूल लूंगा और उससे वो डेटा को उठाऊंगा Hive warehouse directory का. So I can bypass that bridge, no, Sentry वाला bridge मैं bypass कर सकता. Now, when I have enabled this Sentry HDFS synchronization, what will happen? Simply नेम नोड बोलेगा, कोई आया ना तो अभी नेम नोड पूछ लेगा एक बार, भाई ये डायरेक्टरी हाइव वेयरहाउस की डायरेक्टरी को मेरे को Sentry ने बोला था कि मेरे से परमिशन लेके किसको हाथ लगाने देने का. ओके, तो इट विल आस्क Sentry भाई ये यूजर को है क्या परमिशन, इफ यस अलाउ इट, इफ नो तो वो URI के ऊपर भी तुमको परमिशन देना पड़ता है. ओके, Sentry, when you enable Sentry you have to give permission to URI also. What is URI? Certain location on the ITFS. So let's go check Sentry CloudAge. I guess CloudAge has document on that.
Apache Sentry is supported by CloudAge. Okay. अरे भाई ये कहाँ लेके आया? No, not here. Hmm. This one. Oh, authorization with Sentry. Yeah, see, I said data engine, Sentry plugin, Sentry server, policy metadata, और जो Sentry के डिसीजन है वो पॉलिसी इंजन लेता है. I want to actually use it. So, okay. की कंसेप्ट नाम याद रख लेना क्या है ये यूजर सिलेक्ट वगैरह क्या क्या है. So here see, name node है कि इधर कहीं दिख रहा. हाँ, see here name node. So whenever you come here with any user Sentry plugin से वो पर्टिकुलर डायरेक्टरी के ऊपर होता है ना. सो देखो तुमको कमांड वगैरह भी यहाँ पे इसका डॉक्यूमेंट इज क्वाइट गुड. अच्छा हो गया है. सी सेट एफएससीएल करके भी ये डायरेक्टरी के ऊपर परमिशन दे रहा है. इफ यू हैव इनेबल्ड, I don't know, do you guys know about HDFS extended ECLs access control list, but that is also the main point. हाँ, using you कैसे देने का. There is some commands also, but I don't know. But what I was trying to show you is Sentry HDFS synchronization between HDFS permissions. See here, all privileges, read access. भाई कहाँ को बोले हो. You have to enable first permission, है ना. वहाँ पे enable center synchronization और फिर एक path पूछता है वो तुमको that on which path you want to get permission from Sentry. तो वहाँ पे हमको Hive warehouse directory का permission देना पड़ता है. ओके. और उसके लिए Hive CLI को disable करना बहुत जरूरी है. I'm not getting this. There was diagram also, as much as I remember. Yeah, and privilege model also, like how Sentry will give privileges for Hive. तो URI के सर्वर के ऊपर दे सकते हैं. द मोस्ट टॉप लेवल इज सर्वर मीन्स हाइव सर्वर 2. देन ऑन सेकेंड लेवल URI आता है, डेटाबेस आता है, फिर टेबल कॉलम पार्टीशन. सर्वर के ऊपर तुम ऑल परमिशन दे सकते हो. इंसर्ट परमिशंस कहाँ पे रहेंगी? सिर्फ टेबल पार्टीशन कॉलम पे, है ना. डेटाबेस में इंसर्ट परमिशन नहीं रहेंगे, डेटाबेस में सिलेक्ट परमिशंस रहेंगी. सो दैट इज आल्सो यू हैव टू अंडरस्टैंड सी विच ऑब्जेक्ट हैज विच परमिशन. सो इंसर्ट तुम सर्वर पे, जैसा आई सेड, सर्वर डेटाबेस टेबल पे कर सकते हो, सिलेक्ट सब पे कर सकते हो, और ऑल परमिशन सिर्फ इन चीजों पे रहेंगी. ओके. सो दीज आर आल्सो द वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स टू show create table how it is going to be happen. Okay, so that is not our main concern, but for now you also know how security will come in picture for authorization or authentication in Hive, right? So any doubt till now in this portion whatever we have covered? How ECL works, that is a different case when we will have more things to cover. For now, can you repeat? Yeah, we will going to do it. Do you have anyone cluster up and running right now? We can perform it, or I will jump directly on your more other part that I have decided to cover. For now, we have a lot to cover still. Anyone have cluster up and running? After the session, we can enable it, or tomorrow I will show you. We will do practical. We'll see practical later. Okay. Echo and Sentry works for Hive security. Sana, we will see that later on. Okay. Now real-time issues. Yeah, that is going to, I am going to take, but there is a lot remaining. We have just half it till now. Let me just give me 2 seconds. I will plug my charger. So first of all should like give me consent like everything is clear till now or any difficulty till now. We will see and then we will go ahead. So please reply back. If I feel like you are guys not interested, then I can wrap up early. Or you guys are getting something like anything new learning today? It's very clear. Okay. RDS is something else now. We don't go in that side for now. Okay. Come on, guys. There is 217 people. 9 people got bored and they left, I guess. What's the matter with others? Any refresh, any query, clear, but
Hive CLI, because it is not meant to be secure. That is why it is not secure at all. It does not support. You can use any, you can impersonate users and you can use it. Beeline is more, has more contributors and they have developed it correctly. That is why it is, let's say Hive, Beeline is the upgraded version of Hive CLI. OI optimization technique, that is what we are going to take. 3 node cluster up and running, if you understand. We will see after if we have done with session. In meantime, tomorrow I'm going to take I'm planning to take, because we have still a lot of theory like high optimization, what is partitioning, dynamic partitioning, static partitioning, bucketing, vectorization, indexing, which are the most of the things that going to be asked. Then what are the parameters we do for hybrid, if there is any issues, how you are going to tackle it. Still they have to be covered, and I guess for interview prospect that is more important. Okay, do admin perform partitioning and bucketing. Sometime you have to suggest how to optimize it, right? Hive tuning, correct. We will see. Yes, we will see bucketing too. Hive modeling, in high data modeling we don't do that. That is the developer aspect. Writing query, forming queries. You might must know the parameters. For example, अभी तुम्हारा यही नहीं है. You are in Scrum meeting, suppose, and your manager asks you, yeah, we have don't have a senior data engineers. Can you perform some partitioning? This is also urgent. What are you going to do then? डेवलपर करेंगे, पर अभी तुम्हारे पे आ गया ना भाई. So where Hive save logs, warlog, in warlog Hive, simple. Why use Beeline not Hive? Because it is not secure, Abrar. I have already said that there is chances that user can impersonate. Have you done with your insecurities in Hadoop session? Then you should know these things, right? Okay, so I think till now everything is clear. What we have seen, like dependencies, what is database, data warehouse, what is Hive architecture, and a lot of, yeah, real-time scenario we will take, and a lot of other things we have covered. Okay, so now I'm not looking at your check comments, chats. We will go ahead and then we will look on the questions. Okay. HQL, SQL are same, no difference. If we enable HA for high metal store, which high metal store DB will be our primary, and the first one that you have enabled in first step, that was already there, that will be primary. However, there is settings you can change. Okay. High modes, Hive on Spark, Hive on Yarn, that is what you are asking. Then simple Hive run, if it is using Hive, if Hive using Yarn as its platform, and simple Tez or MapReduce, so it is Hive on Tez, but apparently all are going to be executed on the HDFS. If it is Hive on Spark, then it will be using Spark as a execution engine. Okay, so here I can write, if you have Spark, Hive on Spark, so you have, it will be working as an execution engine. Yeah, I already have said about API here only. So the API you can implement using the curl command. Okay, and it was very powerful. I said that you can even deploy whole cluster. Okay, so we have completed most of the part. Now let's begin with Hive tuning part. So there is many Hive server to HA, we will see it tomorrow. So there is many tuning techniques. Okay, so what is basically tuning? Hive tuning is we do some optimization with parameters, we play with parameters, and we come on decision that using those parameters, our query will be optimized. Why? Because at the end, everything what we are doing is to save time. And why we are saving the time? Why we want to save time? Because time is money. Even if your single query has tuned or got performance improvement by 1 minute, also there is, you have a lot of, you have like you just will see it is like you have said 1 minute,
but you don't have any idea how much burden you have saved from name node, Hive, Zookeeper, and other components from their dependencies. In 1 minute of time, in 1 month, if your cluster is running 200, 400 jobs per day, that 1 minute will hamper a lot. Okay, guys. So even 1 minute is having a lot of value. Okay. So even if you will tell no, like yeah, see, I have optimized my query with 1 minute, your solution architect will going to look like you are the hero. Okay. So always remember that. How will fire query in with partition? Just you have to implement. You have to say that query this partition. Simple. Right. So let's begin. Okay. So what is Hive partitioning? First, in Hive tuning, we will take Hive partitioning. Okay. So and then I will tell you the parameters too. Okay. Partitioning comment. Okay. So okay. So let's see how I will tell you how Hive queries the data. Okay. So for example, this is one table having 20 million rows. Okay. 20 million rows. Okay. And you want to perform the query. Yeah. Like you wanted to say there is data of all the countries. Okay. Then you wanted to look on, for example, in India, how many people are buying XYZ soap or XYZ soda or anything, any product, cosmetic, whatever you want to know. So I written the query like select this product column, and let me write sample query for you. Like you will write select star uh, from table XYZ. Okay. Okay. Yeah, particular column यहाँ पे you can say like select cost. Okay, or average cost, multiple thing you can do. Okay, that is not the question. We are not here for query learning. Just I am giving you a sample. Select column cost from the table XYZ where country equals to USA or India, for whatever it is. Okay, so it will be in colons. And you can call this sum of cost. So तुमको पता चल जाएगा टोटल कितने लोगों ने भाई खरीदी करे, right? अब it will bring the sum of all the cost, or what it will do now. Hive कैसे करता है? It will read all 20 million rows in that table. So that is going to take huge time, right? 20 million रोज रीड करने के लिए उसको 5 घंटा लग गया, फॉर एग्जाम्पल. लेट्स टेक एग्जाम्पल, इतना नहीं लगे, फॉर एग्जाम्पल 1 आवर लग गया. तो 1 घंटे तक तो बैठा है, वो मैनेजर बोला ठीक है भाई आएगा, अभी आएगा. 1 घंटे तक बैठे, 1 घंटे बाद आया आंसर. अभी उसका मैनेजर के ऊपर से फोन आया कि भाई इंडिया के वास्ते भी बताओ, तो फिर पागल हो जाएगा वो. और वो फिर पूछेंगे तुमसे भाई, उसको ऊपर से बोलेंगे इतना टाइम क्यों लग रहा है ना. डेवलपर बोलेगा भाई अभी इतना वो रीड कर रहा है, उसको पता है ना 20 मिलियन रोज रीड कर रहा है ना वो. 1 रो रीड करेगा, सेकंड रो रीड करेगा, थर्ड रो रीड करेगा, 4 रो रीड करेगा, फिफ्थ रो रीड करेगा, राइट. It will keep on reading all 20 million rows. Then it will filter out the USA from all the rows, and it will sum that column of cost for you, and then it will give you the result. So much hectic, right? That is going to take a lot of time. So why not, if I get the data of only USA, why to query all the 20, how many states are there? I don't know. Let's say hundreds countries are there. That I don't know how many are there. Okay, so 100 countries दुनिया में, XYZ नंबर ऑफ कंट्रीज है. उतनी कंट्रीज को क्वेरी करने के लिए अलग अलग डेटा बना देता हूँ ना मैं, अलग अलग टेबल बना दूंगा. बट दैट इज ऑल्सो द बर्डन ऑन माई हाइव. इतने सारे टेबल मैनेज करो, यूएसए का अलग. अब जो मेरा एक आरडीबीएमएस है जहां से डेटा आ रहा है, राइट, एक काफका से आएगा ना. फॉर एग्जाम्पल यहाँ से काफका से डेटा आ रहा था, एक आरडीबीएमएस के थ्रू डेटा आया था इधर. ओके, एचडीएफएस पे. तो उसको तो नहीं पता था, उसने बस आरडीबीएमएस से पूरा डेटा उठाया, जहाँ पे एक ग्लोबल आरडीबीएमएस पर तुम्हारा डेटा आया था सारा कॉस्ट का, पूरे दुनिया में कितना सेल हुआ है. उसने स्टार्ट किया क्वेरी करना, तुमको रिजल्ट आके दे दिया, राइट. यहाँ पे रख दिया. अब हाइव ने उसको टेबल को अपने अंदर लोड किया डेटा को,
एंड इट इज क्वेरिंग। अब तुम बोल नहीं सकते कि हर कंट्री के लिए एक नया टेबल बनाओ। सो इट इज टेकिंग योर टाइम, इट इज टेकिंग योर मनी, इट इज यूजिंग योर यूटिलाइजिंग योर रिसोर्सेज, देयर इज अ लॉट ऑफ वेस्टेज for this query, for only count taking result of country USA. So what should I do? So मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास कंट्री नाम का एक कॉलम होगा ना, तो उसमें मल्टीपल कंट्रीज है। सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन पार्टीशन दैट टेबल अकॉर्डिंग टू कंट्रीज, राइट। तो अगर मैं पार्टीशन कर रहा हूँ ना, तो क्या होगा कि ये टेबल के अंदर यूएसए का, ये मतलब मेरी वेयर हाउस डायरेक्टरी के अंदर XYZ टेबल का नेम था, उसके अंदर ना यूएसए का एक अलग से फोल्डर बन जाएगा, इंडिया का अलग से फोल्डर बन जाएगा, उसके अंदर जापान का अलग से फोल्डर बन जाएगा, चाइना का अलग से फोल्डर बन जाएगा। फॉर एवरी कंट्री इट विल मेक फोल्डर्स इनटू द सेम टेबल। ओके, इट विल स्प्लिट दैट डेटा अक्रॉस द कॉलम, दैट पर्टिकुलर कॉलम, विच कॉलम, कंट्री कॉलम। ओके, सो व्हाट इट हैज डन, उसने ये इसके ये जो टेबल थे जिसमें 20 मिलियन रोज थे, उसका पार्टीशन कर दिया भाई। ये यूएसए वाला कॉलम हो गया अभी एक, है ना। देन अगेन इट हैज डन कॉलम फॉर इंडिया। सो अभी क्या हुआ, टेबल एक ही है लेकिन वो पार्टीशन हो गया, एंड इट इज सेविंग अस टाइम। सो नाउ व्हेन आई विल डू, नाउ व्हेन आई एम रनिंग द कॉलम, व्हेन आई एम रनिंग दिस सेम कमांड अगेन, सो व्हाट आई विल डू, आई विल गो ऑन द टेबल डायरेक्टरी। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये टेबल है ना, XYZ टेबल है, राइट। सो ये टेबल का डायरेक्टरी में गया, वो डायरेक्टरी का नाम क्या था, यूजर हाइव वेयर हाउस डायरेक्टरी, एंड इसके अंदर XYZ टेबल। एंड इट व्हाट इट विल लुक फॉर, अरे यहाँ पे तो मेरे को बहुत सारे फोल्डर दिख रहे हैं, सो इट विल लुक, वेयर इज यूएसए वाला फोल्डर, इट विल गो यूएसए वाला फोल्डर, इट विल डायरेक्टली स्टार्ट टू काउंट द कॉस्ट एंड इट विल प्रेजेंट यू हेयर। सो 100 मिलियन जो अलग 100 कंट्रीज थी उनका डेटा तो तुमको रीड ही नहीं करना पड़ा। हाउ मेनी टाइम यू हैव सेव्ड, राइट। So it is one of the optimization technique or not? Is it? But yes, definitely it is going to save you huge time, right? Correct. So ये होगी partitioning. So what is the partitioning? We divide the data across the, we divide the table, split the table across the column. That is the definition of partitioning. Now there is two types of partitioning: static partitioning, dynamic partitioning. Okay, partitioning समझ गया ना, static partitioning हो गया, सेकेंड इज डायनेमिक पार्टीशनिंग। अब फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास, तुमको मैनुअली डेटा इंटर करना होता है तुम्हारी कंपनी के अंदर, लाइक तुम्हारे पास से, तुम हमने यूएसए के अंदर एक रख दिया था RDBMS, इंडिया में हर कंट्री में एक RDBMS रख दे, जाकर डेटा वहां पे आएगा। तुम्हारी कंपनी के पास बहुत पैसा था, उसने इन्वेस्ट कर दी। अब क्या होता है, सबका डेटा आता है, लेकिन अभी तुम्हारे पास तो हदूप एक ही है। अब तुम उसके अंदर हर एक अगेन प्रॉब्लम, हर कंट्री का अलग से टेबल नहीं बनाना है, मैनेज करने में हार्ड हो जाएगा। तो तुम क्या करते, स्टैटिक पार्टीशन करते, भाई ये देख टेबल ये आया है ना, ये पार्टीशन, ये बता रहा हूं मैं, ये पार्टीशन के अंदर डेटा को लोड कर ले। ओके, सो हाउ वी डू इट, हम तुम बोलेंगे इंसर्ट डेटा बोलेंगे, राइट, इंसर्ट, या बोलेंगे लोड डेटा बोलेंगे, लोड डेटा इन पाथ, जो भी पाथ से आया है वो XYZ पाथ है ना। अभी मैं यहाँ पे HDFS पे कोई भी पाथ में रखा था, तुम क्या बोलेंगे कि इन पाथ बोल दिया तुमने, इन टेबल XYZ टेबल के अंदर डाल दे, वेयर, या फिर ऐसा बोल देंगे पार्टीशन, वेयर वेयर नहीं आएगा, और उसका पार्टीशन क्या होना चाहिए, कंट्री इक्वल टू यूएसए और एक्स। यहाँ पे जब भी जो भी डेटा है ना, तो तुम लोड करेंगे पार्टीशन के अंदर, तो यहाँ पे सिर्फ नेम बदलते हैं, कंट्री इंडिया। सो स्टैटिकली मैनुअली यू आर लोडिंग डेटा इनटू द टेबल बेस्ड ऑन योर डेटा। ठीक है, HDFS पे 10 डायरेक्टरीज थी, 10 डायरेक्टरी में 10 कंट्री के नाम थे, एक एक करके तुमने यहाँ पे पाथ बदल दिया। पहले यहाँ पे इंडिया का HDFS/इंडिया का डेटा था, तो ये इंडिया के अंदर इंडिया आ गया। तो यहाँ पे तुम फॉर एग्जाम्पल XYZ कंट्री, और यहाँ पे XYZ पाथ, XYZ कंट्री का पाथ, और यहाँ पे ये, तो ये दो पैरामीटर चेंज होंगे, एंड यू विल लोड दैट डेटा इनटू योर स्टैटिक इज हार्ड कोडेड कंट्री वैल्यू, डायनेमिक इज पैरामीटराइज। भाई ऐसा बोलेंगे ना तो किसी को भी नहीं समझेगा। ओके, ऐसा बोलने का सिंपली, व्हेन यू हैव टू इंसर्ट डेटा मैनुअली, व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। ओके, वहां पे तुमको तुम्हारे वर्ड्स में बोलना है, just make sure you use just keywords, otherwise you have to explain it in your words only. Okay,
पूरा भी नहीं रटना है, थोड़ा बहुत चलेगा, उसको लगेगा पूरा ही रट के आया है, हार्ड कोडेड बिट कोडेड बोल रहा है कुछ तो भी, वी डोंट हैव टू डू दैट। ओके गाइस, सो यहाँ पे हम दे देंगे कंट्री का नेम चेंज होगा, वो पार्टीशन बनाते जाएगा उसका उसका सिंगल टेबल मल्टीपल पार्टीशंस और मल्टीपल पार्टीशन डायरेक्टरीज के अंदर उसका फाइल, उसका डेटा। हु कन्वर्ट एसक्यूएल इनटू द कोड इन माय प्रोड्यूस जॉब। ओके गाइस, डेवलपर नहीं है अपन, है ना, छोड़ दो उधर, इधर ध्यान दो अभी, ठीक है। ओके, सो समझ में आ गया व्हाट इज स्टैटिक पार्टीशनिंग, बट अब यू हैव ओनली वन ग्लोबल डेटाबेस, राइट, and you have to import the data from that global database, and you don't know which data belongs to which country. There is only one single file. Then the picture of dynamic partition will come. Okay, then only dynamic partition will come into the picture. You will use dynamic partition. What you will do, you simply will create the steps I am telling you. You simply, हाँ बता रहा हूँ, you simply will create one table XYZ, उसमें सारा डेटा हम लोड कर लेते हैं, ठीक है। उसमें टेबल के अंदर टेबल बनाएंगे, एक पूरा XYZ जो भी था हमारा, उसके अंदर डेटा लोड कर लेंगे। अब ये टेबल के अंदर कोई भी वो नहीं रहेगा, पार्टीशन। देन यू हैव टू क्रिएट दी अनदर टेबल, न्यू टेबल विद पार्टीशन, उसके अंदर तुम पार्टीशन वाला वैल्यू देके क्रिएट टेबल विथ दिस स्कीमा, पार्टीशन बाय XYZ कॉलम। ओके, आई विल शो यू क्वेरी ऑल्सो, ठीक है। न्यू टेबल बनाएंगे जिसके अंदर पार्टीशन रहेगा। देन यू हैव टू डू ट्यूनिंग नाउ, फॉर ट्यूनिंग फॉर व्हाट, टू इनेबल द डायनेमिक पार्टीशनिंग। To enable that query, what are the parameters? There is two parameters basically to enable the dynamic partitioning. What are the parameters? That Hive dot accept dynamic. I'm writing in short. Okay, dynamic partitioning mode, not mode, enable equals to true. Okay, ये property है first वाली, and then second property will be the same, but we have to define the mode, and the significance of mode also I will tell you. So dynamic partitioning mode, so for dynamic partitioning we set it to non-strict. Why we set it to non-strict? Anyone? Why will set it to non-strict? I don't tell that for dynamic partitioning, I want the reason. strict रखने से क्या होगा? If it is set to strict one, yes, then we no, it is not for static partitioning. We have to pass data manually because it will take like वो उसको इतना सीरियसली लेगा कि भाई ये पार्टीशन है ना, मैं कुछ नहीं सुनता, मेरे को सबका डेटा अलग अलग ही चाहिए। Okay, and in non partitioning, what like in if it is set to strict, you have to pass at least one partition data, other it will take care of. Okay, if you have set the execution एग्जैक्ट डायनेमिक पार्टीशन प्रॉपर्टी ट्रू, ओके, यहाँ कर अगर प्रॉपर्टी ट्रू रखा और इसको स्ट्रिक्ट कर दिया ना, तो स्टिल इट विल डू, बट यू हैव टू पास वन पार्टीशन डेटा। फॉर एग्जांपल एटलीस्ट यूएसए के लिए तुमको डेटा पास करना पड़ेगा, बट अगर यहाँ पे नॉन स्ट्रिक्ट रखा तो तुमको कोई पास करने का जरूरत नहीं है। इट विल गो डायरेक्टली ऑन कंट्री कॉलम, इट विल सॉर्ट ऑल द वैल्यूज, इट विल ऑटोमेटिकली क्रिएट द पार्टीशन फॉर यू। ओके, दैट इज द मेन डिफरेंस। ओके, सो दैट इज आफ्टर तुमने कर लिया, फिर तुम डेटा लोगे और तुम इसके अंदर इंसर्ट कर दोगे। देन यू विल इंसर्ट ऑल डेटा फ्रॉम अर्लियर टेबल। ये ओल्ड वाला टेबल है ना, वन वाला टेबल जो है हमारा, वन स्टेप वाला टेबल, वहां से तुम किसमें, फ्रॉम टू अवर न्यू टेबल, तो इट विल ऑटोमेटिकली क्रिएट द डेटा। और एक रीजन, ये टेबल के अंदर कंट्री कॉलम प्रेजेंट रहेगा, ये टेबल के अंदर कंट्री कॉलम प्रेजेंट नहीं रहेगा। ओके, इवन स्टैटिक के अंदर जब तुम टेबल बनाओगे स्कीमा के अंदर कंट्री कॉलम प्रेजेंट नहीं रहेगा, बिकॉज यू आर पासिंग दी वैल्यू सेपरेटली। जो पार्टीशन रहता है वो पार्टीशन टेबल स्कीमा के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। ओके, ओके, नहीं भाई, अगर तुम्हारे पास सबका डेटा ऑलरेडी अलग अलग है तो तुमको डेमो टेबल बना के करने का जरूरत नहीं है कुछ। ओके, so that will not be same as dynamic partitioning. Okay, so which config files?
schema, I am telling that in schema the partitioned column will not be present. Schema तो present होगा, otherwise how you will be able to make the data, how you will be able to make the table. In partition table, the partitioned column will not be present. Let me show you. चलो हम देख ही लेते हैं गूगल करके. हाई पार्टिशनिंग विद एग्जांपल, ये सही है. हाँ, ये क्या बता रहा है, स्टैटिक पार्टिशनिंग बता रहा है ये, ठीक है. सो ही क्रिएटेड द टेबल, राइट. अभी टेबल देखो, यहाँ पे आईडी लिया है, नेम लिया है, एज लिया है, इंस्टीट्यूट लिया है, राइट. एज आई सेड, स्टैटिक के अंदर पार्टीशन टेबल के अंदर पार्टीशन कॉलम का नाम नहीं है. हेयर कोर्स कॉलम इज नॉट प्रेजेंट इन स्कीमा. मतलब जिसके अक्रॉस यू आर स्प्लिटिंग द डेटा अक्रॉस द कॉलम, इट विल नॉट बी प्रेजेंट हेयर. ओके, गॉट इट नाउ. तुम्हारे स्कीमा के अंदर पार्टीशन टेबल नहीं होता है. Okay, so you have created it and then you will pass the data manually. See, load the data local in path. In our case there will be no local because we are putting data from HDFS. यहाँ पे HDFS का path आएगा into table and the partition you want to create. अरे यार क्या हो रहा है. Okay, the partition you want to create, उसको partition के syntax से define करने का. This site is totally crap. ठीक है. तो ये ऐसा हर, फॉर एग्जांपल सी, इन्होंने बताया, इन्होंने कोर्स जावा कोर्स के लिए डेटा लोड किया, देन हडूप पार्टीशन के लिए डेटा लोड किया, तो वो पार्टीशन के तुम्हारे डायरेक्टरीज बना देगा ऑन योर HDFS वेयर हाउस लोकेशन, राइट. सी यहाँ पे इसने पार्टीशन कोर्स का एज आई सेड फोल्डर बना देगा, डायरेक्टरीज बना देगा, तो उसने बना दिया है ब्राउजर में. ओके, देन सिलेक्ट करेंगे आप, वेयर क्लॉज लगाएंगे, वेयर कोर्स इज जावा, सो इट विल ओनली गो लुक ऑन कोर्स जावा डायरेक्टरी एंड इट विल गिव यू your query result directly. That is how you will optimize your query. Why so? To optimize our query, हम यहाँ पे डायरेक्टरी बना रहे हैं ना, तो उसको टेबल में ऐड करने का जरूरत क्यों है ना. उसको पता है, वो इधर कोर्स में देख लेगा, पार्टीशन टेबल में देख लेगा, कोर्स इक्वल टू जावा था, मैं जाके उसको वापस से फाइल के अंदर जावा ढूंढने का, एक कॉलम बढ़ाने का, तुम्हारा डेटा का साइज बढ़ाने का जरूरत नहीं है ना. दैट इज वाई. देन डायनेमिक पार्टीशनिंग वाला पार्ट. हाँ, सी डायनेमिक पार्टीशनिंग में कैसा होता है, इसने किया सी. ओके, डायनेमिक पार्टीशनिंग मोड ट्रू एंड पार्टीशनिंग मोड टू स्ट्रिक्ट, नॉन स्ट्रिक्ट किया है इसने. एक पहले टेबल बनाया, ओके, डेमो टेबल, सी डेमो टेबल बनाया. ओके, इसके अंदर स्ट्रिंग होगा प्रेजेंट बिकॉज इट दिस टेबल विल, बिकॉज हमको नहीं पता ना कौन सा डेटा कौन से कॉलम से मैच कर रहा है. डायनेमिक पार्टीशनिंग में वी डोंट नो विच डेटा बिलोंग्स टू विच कॉलम. सो एक इसने सैंपल टेबल बनाया, उसके अंदर डेटा लोड कर दिया पहले सब, फिर एक पार्टीशन टेबल बनाया, राइट. पार्टीशन टेबल बनाया, उसके अंदर भी यहाँ पे स्कीमा के अंदर पार्टीशन कॉलम प्रेजेंट नहीं होगा. ओके, देन उसने इंसर्ट किया, क्या इंसर्ट किया, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, मतलब नया वाला हमारा पार्टीशन अक्रॉस द कोर्स एंड सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम डेमो. सी उसने डेमो के अंदर से हर एक किया, तो ये क्या करेंगे, सारा डेमो के अंदर का डेटा स्टूडेंट के अंदर डाल देगा हमारे, और क्या करेगा, पार्टीशन कोर्स के हिसाब से उसको मूव कर देगा. जस्ट अ सेकेंड गाइस. ओके, सो सी जैसे मैंने बताया, इन एक्चुअल प्रैक्टिस ऑल्सो दिस हैपन्स. तुम ऑलरेडी जो डेटा प्रेजेंट होता है उसके ऊपर से, yes, it will save the data from then it will move the data accordingly into the partition table. So ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है. insert into column करेंगे हम, then you can see default partitions. इसके अंदर जाएंगे तो तुमको पूरा के पूरा course and everything बन के मिल जाएगा. that is how it creates. okay, in actual also it is similar process, no changes I have seen. ऐसे ही होता है, बस वहाँ पे थोड़ी क्वेरीज वगैरह बड़ी होती है क्योंकि टेबल्स बहुत ज्यादा होते हैं, स्कीमा बहुत बड़ा होता है. ओके, सो व्हाट वी हैव सीन देयर, इट इज रिटन ओवर हेयर ओनली. इंसर्ट करने का, फिर क्वेरीज वगैरह रन करने के, इट विल क्रिएट एवरीथिंग फॉर यू. सो दैट इज व्हाट द पार्टीशनिंग. डोंट गो बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स आल्सो. ये ना यहाँ पे अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है हमने जहाँ से देखे. इफ यू विल रीड इट वंस, यू इट विल बी क्लियर. देन सी चेक द लेक्चर्स. Admins, sometimes you have to do some scenarios you have to take care of. You have to do, for example, there is
a lot of data and you have to suggest what we have to do. We have to do partitioning, we have to do bucketing. So that is why you should know, right? You have 4 years, 5 years of extensive experience and you don't know, then there is really shame. They will point it out to you. So then we have done with partition. That's enough for partitioning. Okay. Then what is bucketing? Okay. Bucketing comes. It is another technique. We don't teach him his roles. This is for you, for your understanding. If that is not present, that is not your role. For example, you are the admin, you are running the ship, sailing the ship, you should take ownership. No, you said, tell them that for this, when to take bucketing, when to take partitioning, when to take both. To know this, you have knowledge, right? If they are suggesting something wrong, how you got to know that? It will comes to you, it will boils down to you that you are not competent, that you didn't point it out at the time of discussion when we were discussing how to optimize our work. Okay, so let's go ahead. Bucketing part. Okay, so what is bucketing? Bucketing is another optimization technique. Simple. So in bucketing, what we basically do, we organize the data. It is organization technique similar to partitioning, but it divides the data into more manageable chunks. तो हमने देखा ना, पार्टीशनिंग के अंदर वो डायरेक्टरीज बना रहा था, लेकिन बकेटिंग के अंदर जब आप बकेटिंग करते हो, so it makes the files. Okay, so you can do bucketing after partitioning too, and you can do bucketing without partitioning too. So it divides the data into number of chunks. For example, कोई डायरेक्टरी थी जिसके कोई डेटा था जिसमें 1 million rows थे, and there is use case like you have to query that data. लाइक तुमको स्टार्टिंग के 100 टाइम बेस्ड डेटा है वहां पे तुम्हारा, ठीक है? सो टाइम बेस्ड डेटा आ रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे 1 मिलियन रोज का डेटा है एक, सपोज, और यहाँ पे टाइम बेस्ड डेटा है और तुमको क्वेरी करना है बीच का कोई तो भी टाइम करना है. सो यू हैव टू डिवाइड दैट बकेट, राइट? अभी तुम पार्टीशनिंग कर सकते हैं ये केस में नहीं, क्योंकि टाइम एक सिंगल कॉलम है और हर एक का वैल्यू अलग अलग है. इन दिस केस यू कैन नॉट यूज द पार्टीशनिंग. So then what you have to use? You have to use bucketing for that. And how you do bucketing? In bucketing क्या होगा, तुम बस उसको बोलते कि भाई ये जो डेटा है ना, इसको 10 पार्ट के अंदर डिवाइड कर दे. So equally 10 parts के अंदर the data will get divided. Okay. And some it use hash techniques and all. That is the technical term that like we don't have to do like how कैसा कर रहा है, Apache Hive कर रहा है, right? You don't have to understand ये कैसा हो रहा है बैकग्राउंड में, हैश कैसे वर्क कर रहा है. You have to just pass the parameters. I want 1000 buckets to be created, 1000 data chunks to be created. Okay, yeah, and we do that by cluster clause, like how to create bucketing. It will show you the syntax and all. है क्या यहाँ पे? नो, गो बैक. राइट, तो यहाँ पे हम क्लस्टर क्लॉज रहते हैं. देखो ये हैश फंक्शन के थ्रू करता है वो बकेट्स को डिवाइड. बस सिंपली व्हेन यू आर क्रिएटिंग बकेट, जैसे हम वहां पे मैनुअली किया था, राइट? वैसे ही यहाँ पे भी बकेटिंग होगा, बट यू टेल दैट क्लस्टर्ड बाय and the column name along which, for example, I said in our case there was time column, so you will set time column here and into 3 buckets, 32 buckets. Like in one of the scenario we have to convert, there was around 10 petabytes, 10 TB of data, 10 TB of table that we have divided into 32 tables. Okay, so using that you create a cluster, clustered by using clustered by clause we create the buckets. And I think he might have shown, yeah, see, it will create the parts. See, I told you it will create the files this time, not the folders. Folders were created into the partition table and files will create into the bucketing table. That is why both you can use. For example, you have petabytes of data, you have used partition, brought it to terabytes. Now you want to you have to divide data into more manageable chunks. So what you will do, आप क्या करोगे, आपको अगर उसको और easy करना है queries को, so you will divide that partition table into bucket. For example, मेरे को तुमने बोले हर टेबल के हर partition के अंदर 10 चाहिए, तो तुम clustered by करके बनाओगे एक column, एक table.
उसके अंदर डेटा को लोड कर लूंगा एंड इट विल डू बकेटिंग फॉर यू एंड इन क्वेरिंग इट विल बी वेरी वेरी इजी फॉर यू बिकॉज वो एक एक देखता है आपने टाइम फ्रेम क्या दी है और डायरेक्टली उस बकेट में जाके डेटा को उठाता है ना. सो इट विल बिकम रियली रियली इजी. सो फॉर इनेबलिंग द बकेटिंग, what is the property? So it is hive dot enforce bucketing. I guess not enforce bucketing equal to true. Okay. Okay. Then there is some other things like let's say you have to set compactions, right? For tuning purpose we need compaction of job. अब हमको पता है कि ये मैप reduce का यूज करता है और लोकल के अंदर हमारा इंटरमीडिएट डेटा आता है, तो sometime you get error. Now we are going to real time scenarios, right? I have given you already a lot of examples that USA वाला जैसे हो गया, तुम अपने खुद के सिनेरियोज बना सकते हो. Then we have seen like 100 million rows time based query. वी हैव सीन पेटाबाइट्स का डेटा बताया मैंने, उसको हमने पेटाबाइट से टेराबाइट्स पे लाया, टेराबाइट से कैसे जीबीस के अंदर लाना है यूजिंग द बकेट्स, राइट. इट बिलीव मी तुम्हारा टाइम फास्ट क्वेरी होता है बकेटिंग टेबल के ऊपर देन नॉन बकेटेड टेबल्स. ओके. देन अनदर ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक इज टू फॉर कॉम्प्रेशन ऑफ व्हाट, डेटा तो कॉम्प्रेस होके आ रहा है. देन स्टोर्ड एज ORC फाइल फॉर्मेट. सी फॉर्मेट का भी बहुत बड़ा मसला होता है, हम डायरेक्टली नहीं कर सकते फॉर्मेट का. दैट इज द डिफरेंट डिबेट. ओके. सो हम कॉम्प्रेस करते हैं, किस चीज को कॉम्प्रेस करते हैं? लेट मी टेक यू टू वन ऑफ द वेरी गुड वेबसाइट. दिस इज द वेबसाइट. आई एम पुटिंग इनटू चैट, सेव इट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग एंड स्टडी. So see, this is the one of the best website to see and check the configurations. Okay. So यहाँ पे देखो, अब क्या होता है ट्यूनिंग का, मैं तुमको बता देता हूँ एक पार्ट. हम ग्लोबल ट्यूनिंग नहीं करते, डायरेक्टली hiveset.xml में जाके हम ये सेट नहीं करके आते प्रॉपर्टीज. वी डू ऑन जॉब ट्यूनिंग. सो व्हेनेवर फॉर एग्जांपल तुमको बोला कि चलो भाई एक जॉब है, उस क्योंकि हर जॉब के लिए रिक्वायरमेंट अलग है, राइट. सो वी हैव टू डू ट्यूनिंग बेस्ड ऑन जॉब. तो आपने बी लाइन में गए और वहां पे हमको प्रॉपर्टी सेट करना होती है. आप बी लाइन में जाएंगे डायरेक्टली और उधर लिख देंगे सेट दिस प्रॉपर्टी. फॉर एग्जांपल तुमको एग्जीक्यूशन इंजन सेट करना है तो एग्जीक्यूशन वाली प्रॉपर्टी लिख देंगे आप इक्वल टू ट्रू. देन अगर सेट करना है डायनेमिक पार्टीशनिंग इनेबल करना है तो वो तुम सेट कर देंगे विद सेट क्लॉज. वी डायरेक्टली सेट इट ट्रू फॉल्स. ओके. सो what are the basic properties you will get to know on this website very well. Okay. So for example, Hive execution engine I have to change. तो what is the property? Hive execution engine equals to mr डाल दूंगा मैं. सी यहाँ पे इन्होंने वैल्यूज दी हुई है, पर राइट नाउ इन सीडीपी के अंदर तुमको तेज के ऊपर चलाना है और फॉर एग्जांपल तेज सेट हो नहीं रहा, वो समहाउ यू हैव सेट इट टू स्पार्क और इट इज ऑन तेज एंड यू वांट टू सेट इट टू स्पार्क. तो तुम जाके क्या यहाँ sat.xml सॉरी hive.xml में जाके चेंज करते बैठेंगे इसको? नो, वी डोंट डू दैट एट ऑल. hive.xml को करेंगे चेंजेस तो तुमको क्लस्टर को रिस्टार्ट देना पड़ेगा, राइट. So that is not feasible and not advisable at all. So what is recommended? We do on-job tuning. Tomorrow we will see how to do that. Okay. So just I am telling you for now what are the main properties. So Hive execution engine is the one of the property. Execution mode like container mode, LLAP mode. There is something else. Don't go into deep with what is the LLAP and all. For now, that is not. If you have to set the reduce task. फॉर एग्जाम्पल कोई जॉब चल रहा है, उसके लिए 50 रेड्यूसर्स बनने वाले हैं तुम्हारे पास एंड यू हैव टू रिड्यूस इट टू 10. सो यूजिंग mapred.reduce.task you can reduce it. Okay. Then some jars we have to pass for custom jobs, so you can pass with this parameter. Auxiliary jars we have to pass for say after enabling sentry. If you didn't specified from the hive.xml, you have to specify you can specify using these auxiliary jars. Okay. And mostly warlib hive the location you might know वहां पे होता है ये, ठीक है. ओके. सो वो सब पैरामीटर्स होते हैं. सी जैसी टेक्निकल पार्ट्स आया 200 से वी केम टू 187 पीपल. ओके. इनके एक्सप्लेनेशन आप गूगल कर सकते हो, ये यहाँ पे भी लिखा हुआ है. आई एम टेलिंग यू ना एक्सप्लेनेशन, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि किस चीज के लिए यूज हो रहा है. देन इफ आपको और ज्यादा पढ़ना है देन यू कैन गूगल इट, यू विल
get to see everything. ये scratch directory मोस्टली हम मैपरेड लोकल डायरेक्टरी के थ्रू ये पैरामीटर स्पेसिफाई करते हैं. Here they are using scale directory parameters. Okay, यहाँ पे वर्जन्स के भी डिफरेंसेस है. Okay, तो you have to look which version you are using. तो वहाँ पे स्केच डायरेक्टरी ये है ना, तुम्हारी लोकल कैशिंग के लिए यूज होता है. फॉर एग्जांपल तुम्हारा इंटरमीडिएट डेटा भी यहाँ पे आएगा, स्पिलिंग डेटा भी यहाँ पे आएगा, सब हाइव जार्स वगैरह यहाँ पे आएंगे. हाँ, परमिशन इधर से सेट होंगे. देन देर इज अ लॉट ऑफ मेन आई विल टेल यू. ओके, लाइक इधर है कि नहीं. डॉट मैप compression codecs. See, MapRed map output compression codec, right? यहाँ पे इन्होंने देखो ना कितने सारे पैरामीटर्स दे दिए हैं ग्रुप करके. So these parameters you have to don't have to remember anything. सब नहीं याद करना है, कुछ कुछ याद करके जाना है. मैं अगर तुमको बता दूं कि तुमको क्या क्या याद करने का, तो रिमेंबर यहाँ पे सेशन में 186 पीपल है, राइट? एंड इन इंटरव्यू दे विल ऑल टेल द सेम प्रॉपर्टीज. एटलीस्ट 10 बच्चे भी साथ में आ गए तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा. सो दैट इज वाई सी इन्फोर्स बकेटेड मैप जॉइंट्स क्या होता है, हाई मैपरेड मोड क्या होते हैं, राइट? सी मैं बोला अभी कि हमको कॉम्प्रेशन करना है ना. तो कॉम्प्रेशन के लिए विच प्रॉपर्टी वी यूज? सो वी यूज दिस प्रॉपर्टी हाइव एग्जैक्ट कॉम्प्लेक्स आउटपुट. सो इससे भी हो जाएगा. और एक होता है आउटपुट हाइव एग्जैक्ट कॉम्प्रेस इंटरमीडिएट, उसके इंटरमीडिएट. सी सो दीज पैरामीटर्स यू हैव टू सेट टू ट्रू. So it whatever your intermediate data is will get compressed, but using which format? So you will define it into this parameter MapRed map output compress codec. Okay, है ना. तुमको तुम्हारे हाई फॉर एग्जांपल यू हैव टू रिड्यूस योर एफर्ट्स फ्रॉम द रिड्यूसर्स. ओके, तुम्हारा रिड्यूसर रन हो रहा है, उसके ऊपर का अगर एफर्ट रिड्यूस करना है तो तुम सॉर्टिंग को इनेबल कर दो, इन्फो सॉर्टिंग. सो इट विल एट सम एक्सटेंट इट विल रिड्यूस द लोड फ्रॉम द reducer bucket, reducer containers. Okay, so bucketing के लिए I told you high infos bucketing you have to set. High auto converts joint, what is this? Okay, so एक होता है, अगर this is true then 25 MB से नीचे का अगर कोई टेबल है ना तो वो उसको मेमोरी के अंदर ले लेता है, and it does all this thing with the mapper containers only. It won't use the map reduce job hole. Okay, so it will improve your query performance. Okay, using these parameters. So you can use my words into interview to say that what actually these are. You don't have to explain everything in detail. They also know whatever the interviewer is, he also know what parameter does, right? You have to just give the overview to them. What is high vectorized execution? This one is also vectorization. क्या होता है? It is also one of the tuning techniques. Okay, in vectorization हमने देखा कि हाइव क्या करता है, वन रो एग्जीक्यूट करता है एट अ टाइम, राइट गाइस? सो गए सब? आर यू देयर? इंटरेस्ट आ रहा है या बोर हो रहा है वो बताओ मेरे को. इज इट इंटरेस्टिंग, राइट? दिस इज द रियल वर्क. ओके, इससे पहले वाला सब कंसेप्ट था. दिस इज द रियल वर्क यू हैव टू डू. तो प्लीज पे अटेंशन लिटिल बिट. ओके, on day-to-day basis you have to put your head over these things. Okay, so high vectorized execution enable किया अगर आपने, so what it will do when reading the data of 1 million rows, it will read data into the chunks or batch of 1024 rows at a time. और एक साथ 1024 rows को वो प्रोसेस कर लेगा. Isn't it amazing? एक बार टेबल के ऊपर जाना नहीं पड़े. So it will reduce some of the efforts, right? But the problem is कि वो सिर्फ ORC फाइल फॉर्मेट के साथ सपोर्टेबल है. Okay, and selection of file format is we decided at the time of building cluster only. Okay, so बाद में बदलना क्योंकि एक ही टेबल के अंदर डेटा आते जा रहा है, ओवरराइड होते जा रहा है, that is really hectic. So people mostly used to do in Avro or Parquet format. Now they came, but there is a lot of issues right now going on with ORC file format. Like it is not implemented totally in industries. Some of the new projects are implementing it. It is doing really good. It is better than other file formats, but not
अप्रोचेबल बाय ऑल द कंपनीज, बिकॉज वो ऑलरेडी किसी और चीज के ऊपर काम कर रहे हैं वो, और जो काम कर रही है उसको कोई टच नहीं करता, ठीक है। जबरदस्ती कोई जाके काड़ी नहीं करने का, सुना है ना, जो चल रहा है उसको चलने दो। So that is also the thing. Then which properties I am able to see here? Hive, optimize or dynamic partitioning. Okay. Okay. No, no, this. Okay. So sometime your job fails. That I wanted to show you tomorrow, but I think it is good for now. अभी बता देता हूँ. Hive server to matrix. Okay. एक और एक properties होता है. Like there is a lot to cover today also. But we already have done 2 hours, right? So जैसे होता है मैक्सिमम कनेक्शंस होता है ना, मैक्सिमम कनेक्शंस हाइव सर्वर 2 के लिए कितने होंगे, कौन सी प्रॉपर्टी से गवर्न होंगे। सो हैज नो थ्रेशोल्ड, ये तो कुछ अलग है। मैक्सिमम ओपन कनेक्शंस आई शुड राइट। सो मैक्सिमम यूजर पर सेशन वगैरह का कुछ प्रॉपर्टीज होता है जो हमको सेट करना होता है। ओपन कनेक्शन इन हाइव बेस्ड ऑन दैट। ओके, limit the concurrent. Okay, so I was using wrong word, it is concurrent connections. So एक यूजर कितने सेशन ओपन कर सकता है, यू कैन डिफाइन इट यूजिंग दिस पर यूजर कनेक्शन, एंड पर आईपी एड्रेस, एक आईपी एड्रेस से कितने आना चाहिए, और यूजिंग बोथ ऑफ द देम यू कैन आल्सो डिफाइन इट हाई सर्वर टू लिमिट कनेक्शंस, बिकॉज what connections do, they drain out the memory, so which is not advisable at all. Your server might get crashed, your server might get hang up, पॉज कंडीशन में भी जाता है सर्वर इन कनेक्शंस के बढ़ने की वजह से, है ना। अभी बोलेंगे पॉज हो जाना क्या है और स्टक हो जाना क्या है, बोथ आर डिफरेंट थिंग। ओके, जब ये कनेक्शंस क्लोज होते हैं तो वो पॉज से रिट्रीव भी हो जाता है। सो आई डोंट नो इफ आई कैन शो यू द स्क्रिप्ट, आई विल शो यू टुमारो, नो इश्यूज। सो दिस इज हाउ यू कैन, tuning means playing with an optimization of these parameters only. Okay, so there is more parameters also. There is some other parameters like mapred.map memory MB, mapred.reduce memory MB. If you know, do you guys know what I'm, what काला अक्षर भैंस बराबर तो नहीं हो रहा? ओके, नहीं ना, ठीक है। तो हम फॉर एग्जांपल मोस्ट ऑफ द टाइम योर जॉब फेल्स विद आउट ऑफ मेमोरी इश्यूज, सब हमको पता है हाइव के अंदर होने क्या है, मैप और रिड्यूस ही टास्क चल रहे हैं ना। सो यू कैन set mapred dot map dot memory MB. These are the parameters. Same for CPU vcos, same for reducers. You can set for reducers. You can set these things for memory, Java, OPTF, something like that. So what are the difference and all? I am going to explain them to you tomorrow when we will be doing practical. Okay. Java.opts. So these are the parameters that you have to learn, you have to memorize before doing the tuning as per CloudAge tuning Excel sheet, correct? So these are the parameters that we do. We do compression, I said to you, right? So remember whatever I have said, these are the important parameters that you can clearly specify in your interviews, but सबका same ना हो जाए इसलिए कुछ extra के मैंने छोड़ दिए हैं. Those are also important. So now you know what you have to prepare. यहाँ भैया रट्टा मारना है, 4 साल से काम कर रहे हो इसलिए। What make you stand apart from the crowd? You have to decide that. Okay. रट्टा ज्यादा देर तक याद नहीं रहता. If you will do practically, you will be able to remember it. Okay, so no need to do that, because have you ever tried to fire sample queries? We have done for our topic today, right? Tomorrow we will see the practical how to do MSCK repeatable, that is for updating metadata into the meta stores. Okay, so these are normal question, you can get it on Google also, but indexing, okay, that is also the important one. Indexing is like यार तुम्हारे बुक की तरह होता है, ठीक है। बुक के अंदर इंडेक्स के ऊपर जाके तुम देख लेते हो कौन सा टेबल है, राइट।
वहां पे कौन, मतलब एक इंडेक्स बनाते हो ना, फाइनल ईयर इंजीनियरिंग के अंदर रिपोर्ट्स बनाए होंगे, उसमें इंडेक्स बनाते हो कि ये पेज के ऊपर ये टेबल है, ये है। तो सेम सिमिलरली हाइव में भी बनाते हैं। तो हाइव क्या करता है, जब हम इंडेक्स बनाते हैं तो वो देखता है कि कौन सा कॉलम कौन से ब्लॉक के ऊपर मैप किया हुआ है। ओके, इफ यू अंडरस्टैंड माई वर्ड, कौन सा कॉलम कौन से ब्लॉक के ऊपर मैप किया हुआ है, तो वो डायरेक्टली वो ब्लॉक के ऊपर जाएगा, नेम नोड से पूछेगा भैया ये ब्लॉक किधर है, पता, वो बताएगा, उधर से वो डायरेक्टली लेंगे। पिट मैप, कॉम्पैक्ट, दैट आर द इंडेक्स हैंडलर्स आर देयर व्हेन यू क्रिएट इंडेक्सिंग। वहां पे हमको इंडेक्स हैंडलर डिफाइन करना पड़ता है। देयर इज अ टाइप। कॉम्पैक्ट में क्या होगा, कॉलम का वैल्यू होगा, ओके, एंड ब्लॉक का आईडी होगा। बिटमैप में क्या होगा, एक एक्स्ट्रा है, उसका अपग्रेडेड वर्जन है, वो डिजिटल इमेज में सेव करता है इंडेक्स को, ठीक है, और उसके अंदर रो भी मैप्ड होती है ब्लॉक के साथ। तो दैट इज मोर ऑफ लाइक इंडेक्सिंग। सिंपल है यार, सब कंसेप्ट हमारे नॉर्मल चीजों से ही उठाए हुए हैं, तो इट इज नॉट समथिंग न्यू, समझ में आ जाता है, इतना कुछ है नहीं। द मेन थिंग्स आर एनीथिंग। कल हम क्या क्या देखेंगे, हम प्रैक्टिकल देखेंगे, और जो जो मेन कॉन्फ़िगरेशन कैसे सेट करना होता है, आई विल ऑल्सो टेल यू, रिमाइंड मी टू टेल द डिफरेंस बिटवीन देम, क्योंकि अभी आप लोग जाओगे सेशन देखोगे, इट इज ऑलरेडी बहुत सारों के लिए हेक्टिक हो गया होगा, राइट। राइट, तो सेशन छोटा रहेगा, कॉम्पैक्ट रहेगा, तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा। आई हैव ऑलरेडी सेंड द लिंक। यहाँ पे मैं फिर से, अरे यार, यू डोंट सेंड प्राइवेट मैसेज, यहाँ पे चेंज हो जाता है, राइट। सो कॉम्पैक्ट रहेगा तो आप लोगों को देखने के लिए भी अच्छा रहेगा सेशन, ओके। एंड हियर आई हैव गिवन यू द लिंक। टुमारो आई विल आल्सो शेयर सम अदर रिसोर्सेज। टुमारो आई विल आल्सो, आप में टेल मी वन थिंग, हैव यू एवर डन प्रैक्टिस ऑन हाइव और नॉट? कोई की है, डेटा लोड किया है, हाइव का टेबल बनाया है, पीपल आर, सो सैंपल टेबल कैसे बनाना है, आई विल ऑल्सो टेल यू। डेटा नहीं मिलता बहुत सारों को, आई विल ऑल्सो शेयर टुमारो, सो प्लीज मेक श्योर यू ज्वाइन दिस सेशन एंड एट लीस्ट वॉट तुझे माई एसक्यूएल हैकर रैंक, ठीक है, वहां से भी होगा, और उससे अच्छे बताऊंगा जहाँ पे स्कीमा भी मिल जाएगा तुमको। अभी बता देता हूँ, मैकरू करके कुछ तो, मैकरू या मैकरू डेटा, this is the one of the best site to install to get data sets. See, just define which columns you want, okay, and the data types here, okay, and preview your data. You will get 1000 and row data from here. See, solved, सैंपल डेटा का मैटर सॉल्व हो गया। आज ही बता दिया, कल याद रहता नहीं रहता इसलिए। सो या दैट इज फॉर टुडे। हमने जो कुछ देखा इसमें कोई डिफरेंस है, एंड द क्वेश्चंस आई एम नॉट आंसरिंग वो अननेसेसरी है। फॉर एग्जांपल सर्डे वगैरह, सीरियलाइजेशन वगैरह इतना डीप नहीं जाता कोई। वी आर एडमिन, नॉट डेवलपर्स। प्लीज परफॉर्म ऑन अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। वाह वाह, अभी मैं भाई पूरा कहानी खत्म हो गया। आप बोल रहे हो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के ऊपर, हाईवे इज नॉट फॉर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, ओके। हाइव सीबीओ, ओके। टिल नाउ, पहले मेरे को ये बताओ, बिफोर टेकिंग एनी क्वेश्चंस, यहाँ तक का सबका क्लियर हुआ है या नहीं? राइट, सीबीओ इज लाइक, सीबीओ पूछ रहे हो ना, वो कॉस्ट बेस्ड ऑप्टिमाइजेशन होता है वो, राइट। तो हम कोर कंपोनेंट, इट्स लाइक व्हाट आई विल टेल यू, क्वेरी इंजन के अंदर ही होता है वो कॉस्ट बेस्ड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। बट मत जाओ इतना डीप में, गए इतना समझ में आ गया तो देन जाओ। यस, कॉस्ट बेस्ड ऑप्टिमाइजेशन हुई, that is more than enough as per interview prospect and working prospect also, टाइम के साथ आते जाता है, you should know, okay. There is a lot of techniques guys, see, हम जितना पढ़ते जाएंगे ना, इट इज लाइक ओशन, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, जितना पढ़ेंगे वो उतना डीप लेके जाएंगे। आप प्रॉपर्टीज, एक विच प्रॉपर्टी, वो बी लाइन वाला बताओ एक बार, प्रॉपर्टीज ओके। हाँ, मतलब हम जब भी कोई सेशन करेंगे, टुमारो वी विल सी दैट बी लाइन वाला कि ग्लोबली कैसे होता है। फॉर एग्जांपल इफ यू आर मेकिंग चेंजेस इनटू yarn site.xml,
that will be reflect to global level. Okay, cluster restart लगेगा. लेकिन when you will enter into beeline type किया, enter हुआ user ID password डाला, तो it is your session only. You can do anything from that. It will not hamper the other session, other users. तो वहां पे गए, आपने कोई टेबल के ऊपर कुछ तो भी कंडीशंस किया, ऑटो जॉइन कन्वर्ट्स वगैरह इनेबल किया, तो दैट इज फॉर यूर सेशन. इफ यू हैव क्लोज दैट सेशन, बी लाइन से एग्जिट कर दिया, वो सेशन खत्म. You have to set properties again. That is what we call on job tuning. Okay. हाई विजुअलाइजेशन टूल के ऊपर जब बीलाइन के ऊपर जाते हो तो वहां पे आपको कनेक्ट करने का ऑप्शन होता है, कनेक्ट टू हाइव HDFS. उसके अंदर आपको हाइव सर्वर 2 का यूआरएल डालना पड़ता है. हाइव सर्वर 2 का यूआरएल डालने के बाद अगर तुम्हारा कैरबरस क्लस्टर है तो तुमको क्रॉस लिमिटर्स वगैरह का थोड़ा कंसेप्ट पता होगा, तो वो करना पड़ता है. की टैब्स वगैरह प्रोवाइड करने पड़ते हैं, JDBC का लिंक प्रोवाइड करना पड़ता है, एंड यू विल कनेक्ट एंड इट विल फ्लॉलेसली कनेक्ट. हाउ टू कनेक्ट टू विजुअलाइजेशन टूल हो गया. डेटा सेट वाला लिंक भेजो भाई. मैकैरो डाल दो, सामने लिखा है तुम्हारे मैकैरो.com. Many user can connect to Hive. So how many users? So that is what you will limit from here. Per user connection, number of user can connect, but you, what will drain your memory? See how you define the Hive server to memory, based on these connections. If your connections is for example 24 connections, you can go up to 8 GB of RAM. For 80 connections, still 80 connection, you can go up to 40 GB of RAM you have to provide, right? If you will type on Google, it will show definitely, I guess, Hive server to heap assignments. Java, you have to decide value, click to changes. It is based on connections, I'm telling you, don't worry. Answer to heap. Let's see, for 1 to 2 concurrent connections. Here it is. So you have to understand, like also prepare like for name node heap calculation, how to do that. For heap, it is very important. Okay. For high heap memory, there is Hortonworks data platform performance tuning document. See, this also one of the website post button Hive server 2. See, over here for 1 to 20 connections, you can set up to 6. For 20 to 40 connections, 12 GB of heap. For 80, line double it, 24 GB, 40 GB. Normally in production cluster, there is around 32 GB assigned first. And there will not, guys, there will not be only one Hive server. There is in big clusters, there is almost like 8 or 9 Hive clusters too. For ad hoc queries, they define simple clusters too. For interactive queries, they can put one special cluster too. For data, for load balancing of those Hive cluster, you can use HA proxy. That is also one concept. Go read it. That is very interesting point also for Hive HA. Right? हम Hive HA क्यों करेंगे? ये है one of the point. क्या होते हैं, like how many time you connect, it will open a session for you if you will keep it connected. जॉब जो होते हैं ना, मल्टीपल टाइप, ये जो प्रॉपर्टीज है ना लिमिट करने की पर आईपी नोड, सो एप्लीकेशन आल्सो ट्राई टू कनेक्ट एंड क्रिएट ओपन कनेक्शंस विद हाइव, सो दैट विल आल्सो रिड्यूस योर परफॉर्मेंस. ज्यादा ही होते जा रहे हैं ना, इसलिए हम लिमिट कर देते हैं ताकि हमारा हाई सर्वर क्रैश ना हो जाए. ओके, सो एचए प्रॉक्सी का भी एक कंसेप्ट है, रीड इट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाई प्रॉक्सी, HA proxy for Hive server 2 कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, रीड इट, सी. यहाँ पे आगे कैसे करना है आपको हाई अवेलेबिलिटी इनेबल करने के लिए. मोस्टली आई हैव सीन दिस काइंड ऑफ सेटअप, ओके, फॉर इनेबलिंग हाई अवेलेबिलिटी फॉर HA Hive server 2s. ओके, डिफरेंट विथ स्पार्क SQL एंड हाइव. स्पार्क SQL इज स्पार्क इंजन यूज होगा बेसिकली, उसके अंदर स्पार्क हैज core engine. Okay, if your Spark session has done or not, are you done with Spark sessions? Yes, then you should know Spark. So Spark has driver. They have built in multiple libraries over that driver, like Spark, SQL, GraphX, mlib, streaming. Okay, so what happens, Spark SQL के अंदर तुमको एक Spark सेशन ओपन करेंगे. Spark क्या करता है ना,
difference between Spark and Hive. Let me tell you that. Hive क्या कर रहा है? मैप reduce यूज कर रहा है. Spark is a engine. Hive is not engine. Hive uses the engine. Okay. क्वेरी इंजन यूज करता है, तेज और मैपर. सो व्हाट दे डस, मैप रिड्यूस जो कंटेनर प्रोड्यूस करेगा ना, वो अंडरलिंग फाइल की बेस, अंडरलिंग जो फाइल है उसकी साइज के ऊपर क्रिएट करेगा. ओके. so there is a lot of long calculation, very long calculations. Okay. so for example तुम्हारा 1000 MB 128 ये साइज का एमबी का फाइल है. ओके. ठीक है. सो वो देखेंगे ये फाइल है और वो स्प्लिट्स क्रिएट करेगा. तो देर इज वन इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स ऑफ स्प्लिट आल्सो दैट आई फॉरगॉट टू मेंशन. स्प्लिट है कि स्प्लिट आता है क्या? Hadoop support split table map split. इनपुट स्प्लिट करके एक पैरामीटर होता है दैट डिफाइंस द मैपर का साइज कितना रहेगा. और जो हाइव को स्टार्टिंग क्या बोलते हैं, उसको स्टार्टिंग इनर्शिया बोलते हैं ना शायद. स्टार्ट होने के लिए उसको टाइम लगता है ना. स्टार्टिंग किक स्टार्ट देना पड़ता है, टाइम लगता है. ये सब आपने सुना होगा हाइव के ड्रॉबैक्स के अंदर. हम्म? तो हाँ. तो मैप रिड्यूस डॉट इनपुट डॉट फाइल इनपुट फॉर्मेट इनपुट स्पेसिफाइड इनपुट स्प्लिट मैक्स नहीं कर रहे हैं यहाँ पे सर्च. हाँ. सो जो इनपुट स्प्लिट साइज क्या होती है तुम्हारी, नई ब्लॉक्स के ऊपर नहीं देते हो, बताता तुमको. तो 128 MB का तुम्हारा ब्लॉक है, राइट. सो ये कितने बनाएंगे? 10. तो तुम्हारी स्प्लिट साइज 10 की होगी. ठीक. तो ये 10 स्प्लिट साइज इक्वल टू 10 मैपर लॉन्च करेगा. सो ये कैलकुलेशन करने के अंदर ना हाई बहुत ज्यादा टाइम ले लेता. ये करते रहता वो कैलकुलेशन, फाइल देखेगा, डेटा रीड करेगा HDFS पे से, फिर उसको डिवाइड करेगा, कैलकुलेशंस करेगा. बिकॉज ऑफ दैट दे कैलकुलेट द ये स्प्लिट साइज वगैरह कैलकुलेट करेगा. देन इट विल लॉन्च कंटेनर्स. ये साइज के ऊपर से ये बेस ये 128 MB के कंटेनर्स लॉन्च करेंगे, उसमें पार्टीशन बनाएगा. बहुत ज्यादा काम होता है उसके पीछे, है ना. तो इसके वजह से उसको बहुत टाइम लग जाता है. वो इनपुट बीच में डेटा बनाएगा, इंटरमीडिएट डेटा बनाएगा, वो रीड करेगा, हाइव एंड रेडी पहले मैप करेगा, उसको शफल करेगा, उसको सॉर्ट करेगा, फिर रिड्यूस करेगा. सो इट इज क्वाइट लॉन्ग टाइम. पर स्पार्क के अंदर कैसा होता है? अब स्पार्क क्या करेगा? स्पार्क ये कैलकुलेशन नहीं करेगा. तुमने ऑलरेडी स्पार्क को बता दिया कि प्रॉपर्टी के अंदर स्पार्क डॉट एग्जीक्यूटर डॉट मेमोरी के अंदर तुमने ऑलरेडी उसको बता दी मेमोरी कि भाई 2 GB का कंटेनर लॉन्च कर दे. तो वो डायरेक्टली जाएगा, यान को बोलेगा 2 GB का कंटेनर लॉन्च कर. और जैसे जैसे उसका रिक्वायरमेंट बढ़ते जाएगा ना, तो हम डायनेमिक अलोकेशन इनेबल ट्रू होता है उसमें ना, स्पार्क डॉट डायनेमिक अलोकेशन ट्रू होता है. और उसके अंदर हम डिफाइन करते हैं कि मिनिमम एग्जीक्यूटर और मैक्सिमम एग्जीक्यूटर कितने होने चाहिए. सो इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग. दैट्स हाउ इट रिड्यूस द एफर्ट. और स्पार्क फिर क्या करेगा? जैसी हुआ तुमने जॉब लॉन्च करे, स्पार्क सेशन में आए, उधर कंटेनर लॉन्च हो जाते. इफ यू विल गो, तुमको अगर सेशन हुआ होगा, उन्होंने बोले होंगे स्पार्क के सेशन, जैसी स्पार्क सेशन डाल के स्पार्क -2 स्पार्क शेल में आप गए स्काला के या पाई स्पार्क के. सो इफ यू विल गो ऑन यान वेबिया, यू विल सी द कंटेनर्स आर रनिंग विद 10% ऑफ कैपेसिटी. तो ऑलरेडी और 10% कैपेसिटी, तुम जॉब सबमिट करो मत करो, कंटेनर्स आर ऑलरेडी रनिंग, गाड़ी बाहर चालू है और गाड़ी बाहर जाके चालू करनी है. हाइव क्या करेगा? नीचे जाएगा, गाड़ी साफ करेगा, गाड़ी में बैठेगा, पेट्रोल चेक करेगा, फिर जाएगा. लेकिन स्पार्क क्या करेगा? बाहर गाड़ी चालू है, डायरेक्ट बैठो और जाओ. तो दैट इज, ड्राइवर भी है उसमें, कुछ भी नहीं करना है. सो दैट इज वाई स्पार्क एसक्यूएल इज. बट लॉन्ग रनिंग जॉब के लिए हाइव हैज इट्स ओन बेनिफिट्स ओवर द अदर टूल्स. ओके. एंड स्पार्क के ऊपर ऑलरेडी बहुत ज्यादा लोड है. तो स्पार्क के स्ट्रीमिंग के जॉब चल रहे हैं, कुछ फ्रॉड एनालिसिस चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, एमलिप चल रहा है, ग्राफिक्स चल रहा है. तो उसको स्पार्क एसक्यूएल देके और ज्यादा टेंशन नहीं देते, है ना. इसलिए हम हाइव को ही ऑप्टिमाइज करने पे लगे रहते, बिकॉज इट हैज गुड कैपेबिलिटीज टू रन द लॉन्ग जॉब्स. ओके. तो लॉन्गर जॉब्स तुम हाइव के ऊपर 2-2 दिन की भी जॉब आराम से रन कर लोगे, वो कर देंगे. जस्ट थिंग इज कि तुम आउट ऑफ मेमोरी ना चल जाओ. ओके. या. ओके. So guys, we have done a lot of things today, and let's keep session small. Okay. So best of luck. What is LLP? It is a live long daemon
और एनालिटिकल प्रोसेस और बोलते उसको. सो वो इन मेमोरी प्रोसेसिंग करता है बेसिकली. जो डेटा बड़ा होता है, डेटा नोड से तुमको डायरेक्टली डेटा नहीं उठाना पड़ता. ओके, इट डायरेक्टली रीड्स डेटा फ्रॉम डेटा नोड्स. योर इंटरेक्शन विल बी कट ऑफ. यू कैन डायरेक्टली रन लिव लॉन्ग डीमन. एक अलग से डीमन होता है, उस पर रन होता है. बट दैट इज ऑल्सो फॉर बिग ऑर्गेनाइजेशन. हर जगह नहीं यूज होगा. यूज केस के ऊपर है डिपेंड. व्हाट आई विल सजेस्ट यू, कीप इट सिंपल. ओके, कीप इट सिंपल. जितना डिटेल में जाओगे आप उतना हंसते जाओगे. सो हमको डिटेल में पढ़ना है, पर कीप इट सिंपल. Okay, so best of luck, guys. Have a nice day. We have done almost everything from the theoretical parts. Tomorrow we will take the practical, and tomorrow also we will keep it really, really simple, and we will see some tuning part and configuration files and everything. Okay, so yeah, we are good to go now. Thank you for your patience. Okay, LinkedIn, please. I don't think I will come. I will come again to you for as a trainer. That is good enough, I guess. Okay, thank you so much. Have a nice day. Goodbye.